Send email to Terry. Just sent it again. Okay. Our offer is 1.5 250 डाउन. तो इस पे तो इसने क्या बोला, इसका रिस्पॉन्ड किया है कुछ? उसने रिस्पॉन्ड करके आपको ये बोला कि 310 दो मुझे बेसिकली. तो हाउ इज ही आस्किंग 310? एंड वो बोल रहा है कि 60 months with possibility of 5 additional year extension, no repayment penalty. These units need some work. Definitely need some work. Kitchen का हाल बहुत ख़राब है. I mean, it's very old. He went down 45K on the listed price. Yeah. The thing is, it's not listed price is like in this market there is no one buying. And आप इसको 45 से 50,000 लेके नीचे आ जाओ, it doesn't matter. It doesn't matter. We have to find a very 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 good deal for buyers to buy, right? क्योंकि अभी जो है buyers की market है, that means कि हमारे पास सेल पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ख़रीदने वाले बहुत कम है, राइट? और ख़रीदने वाले कम है, दैट मीन्स ख़रीदने वालों के नखरे होते हैं, राइट? तो इस वजह से हमें कैश एंड कैश भी अच्छा चाहिए, फिर उसमें रेंटर भी होना चाहिए, फिर उसमें कोई काम भी नहीं होना चाहिए. बहुत मसले हैं. 3 साल पहले ये होता था कि आप 20% भी डिस्काउंट ले आए प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी बिक जाती थी, सिर्फ 20%. अब 30 से कम की बात ही नहीं होती है. बट एनीवेज, ये मार्केट भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. इट्स गोना चेंज ओवर टाइम. बट जब हमको बस मार्केट के हिसाब से अपना अपना स्ट्रैटेजी बनानी होती है. अभी बायर्स की मार्केट है, तो बायर्स के लिए हम मार्केट के लिए काम कर रहे हैं. तो उस पे अगर ये 1 मिलियन पे भी आ जाता है ना, इट्स नॉट गना. अगर ये 1 मिलियन पे भी आ जाता है ना और कैश मांगता है, कोई भी इसको नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं सेल होगी, राइट? इवन दो कि कैप रेट काफ़ी अच्छा है, और 1 मिलियन पे तो और अच्छा हो जाएगा कारपेट, बाकायदा 12 पे चले जाएगा. बट नो बडी इज गोना बाय इट इवन एट 1 मिलियन. Creative finance probably the only solution for the property to buy. But 24 months. Okay, so let's quickly run these numbers. ताकि इसको हम एक प्रॉपर ऑफर दे दें. एंड देन okay, I'm going to share my screen or change my screen, I guess. Change stream. Any update on the Michael Greenwich? No update. I called him, I texted him yesterday, because yesterday was my follow-up, so I texted everyone, all the people that we are talking to. No response with him. He called me yesterday night. I called him back, didn't respond, and then I texted him yesterday. No response, but I'll call him today and see what's the update. I have to call a couple more people, and Anna as well. Sorry, Cordwell Street. Anyways, let's work on this first. So that's the price 1595. It should be. Right, so हमने इसको ये ऑफर दिए, and then we 1.5 300,000 down. इसको चाहिए 300,000 down. What is the net operating income? The net operating income actual 2024. इसकी 2025 की net operating income, do we have that? Let's see.
it's not this one. Copy text. Why is it? I'm not sure what's going on, but let me see. Okay, so 2023 we have expenses. Look at one thing, guys. So he put expenses, right? Repairs, supplies, maintenance, insurance, property tax, utilities, everything is here, right? What is missing? इसमें से एक चीज miss है. What is that one thing missing? There's one big thing is missing. इसमें से एक बड़ी चीज miss है. वो कौन सी चीज है? देखो इसने किसी भी साथ नहीं लगाई है. Anyone has a clue? Is no one speaking today? इस पूरे उसमें स्ट्रक्चर में एक चीज़ मिस है, राइट? इसमें से कौन सा एक्सपेंस ऐसा है जिसने नहीं लगाया और जिसकी हम बहुत बात करते हैं? Anyways, I'll move on until you guys answer on this. Okay, so net operating income, um, 113 से डाउन हुआ है 107 तक, और so far इसका प्रॉफिट है 57. Okay, so 107 को हमको डिवाइड करना है by 12, so we get the operating income 621. All I'm doing is dividing this 107 100,000, divide that by 12, right, to get the net operating income. So that's about 8900. So I'm gonna write that here, 8960. Okay, so that's that. The other thing we need to also do, yeah, so the one thing that we were missing, guys, was the vacancy. ठीक है, इसने सारे पैसे लगाए हुए हैं but vacancy के पैसे नहीं लगाए. So this is something we have to add, right? So we have to add like 5% vacancy here. Okay. तो 2025 का हमारे पास आ गया है. So last thing we have to do, so the last thing we have to do is check what he needs. ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग 4 यूनिट से ज़्यादा की है तो ये कमर्शियल इस पे लोन लगेगा. So that's about 10%, right? First position ये रहा, second position ये रहा, right? So he needs, how much he needs? उसको चाहिए कोई, let me see, he needs 310 down payment. But based on this, हम उसको और ज़्यादा दे रहे हैं, but we still are okay in here, right? So let's fix our payment. असल में इसमें payment बहुत कम है. I think if we can increase the payment, he will like that. So payment जो है 580 है, ठीक है, वो agree नहीं करेगा 580 पे. So we have to bring the amortization down. Let's go with 60. Let's go 50. Yeah, so it's red on 50. That's on 55. Okay. The other thing we have to do is to figure out the loan. So let him carry, let's say he wants 20%, right? So let's do 70. Let's do 75 for now. Okay. Let's bring this down to 4.
Okay, so let's maybe actually make it 40 just to be safe. Okay. ओके सो हम जाएंगे बैंक के पास और बैंक को बोलेंगे कि हमें 40% लोन दे दो इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो हमें 40% मिल जाएगा लोन। हम एक और बंदे के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे हमें लोन दे दो 60% का, ठीक है। जो भी बचा हुआ लोन है, 40 का हमें यहाँ से मिल गया, 60 का हम कहीं और से लेके आएंगे। टेक्निकली 60 ही लेके आएंगे, हम टेक्निकली 70 लेके आएंगे, राइट, या 65 का। तो दोनों के लोन आ गए और उसको मिला के हम मिस्टर बायर को दे देंगे, जो भी बायर होगा, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो सेलर के पास चले जाएगा जितने पैसे सेलर को देने के जो कि 375 हैं, और जितने पैसे बैंक को देने हैं। और फिर हम इन रिलेशनशिप विद द सेलर चले जाएंगे फॉर आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर मंथ्स वी डिसाइड, ओके। सो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, 310 वो बोल रहा, तो हम 375 दे रहे हैं। मैं इस वजह से देना चाह रहा हूँ ताकि हमारी इनकम जो है मंथली वो लेस है, राइट। 1700 हम उसको ओनली दे रहे हैं 1.5 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी पे, सो इट्स लेस, सो दैट्स व्हाई आई एम इंक्रीजिंग द डाउन पेमेंट, ओके। और उसने बलून कितना बोला है, 60 मंथ्स का। लेट्स गो विद 7, वी कैन नॉट डू 7, 8। So Hamad, this is what we're gonna tell him, right? Interest is still zero. There is no interest. There is no possibility of interest. अगर मैं इस पे 1% भी डालूं, look at our numbers, right? Let's go with 2. We can actually put 2%. Looks like 3. Yeah. So 2% is probably the best we can do. Interest, nothing more. ठीक है? Even then आप देख सकते हैं monthly पे ये रेड है, annually it's okay, right? So that's one thing. For now we'll start with 0. अगर वो बोलते हैं नहीं interest rate लाजमी है, then we'll add like a 1% interest rate and then 1% more and 1% more, ठीक है? So I'll give you this down payment amortization, don't mention that. Okay, okay, I've sent you a picture, Hamad. So basically I'm going to go through it real quick. आपकी परचेस प्राइस उतनी रहेगी जितनी हमने बात करी है, ठीक है। हम परचेस प्राइस हमने काटी है इसकी, तो हम उसी तरह उसी पे रहेंगे परचेस प्राइस पे। परचेस प्राइस 1.5, डाउन पेमेंट 375। हमने इसको ज़्यादा डाउन पेमेंट दी है, क्यों? दो रीज़न है। एक तो हमारी मंथली पेमेंट छोटी है, ठीक है, और हमारा ज़ीरो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो उसको हो सकता है मसला हो, तब जब वो वापस बोलता है नहीं मुझे इंटरेस्ट रेट लाजमी चाहिए, तो हम इसको वापस कर सकते हैं, उसको डाउन पेमेंट को कम कर सकते हैं, एंड देन और इंटरेस्ट रेट का 1-2% बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वी विल सी व्हेन वी गेट देयर, ओके। और मंथली पेमेंट आपने उसको बता देनी, बस मेक श्योर करना आपने ये नहीं बताना उसको एमिटाइजेशन 55 ईयर्स, ये नहीं बताना, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि अगर बलून नहीं होता और 55 साल तक हम पे करते रहे उसको $1,125, नो सॉरी $1,704, तो 55 साल में पूरे पैसे कवर हो जाएंगे, राइट। बट हम 55 साल से पहले एक बलून डाल देते हैं 10 साल का, जो इन दिस केस 9 साल का है, जिसमें हम पैसे उसको सारे वापस कर देंगे, ठीक है। तो डोंट मेंशन एडवर्टाइजेशन, उसको समझ नहीं आएगी, वो बोलेगा 55 साल का आप लोन ले रहे हो मुझसे, ठीक है। और वन बिग थिंग आपको मेंशन ये करनी है कि आई एम गोइंग टू फाइनेंस द डाउन पेमेंट, इसको नहीं भूलना। उसको बोलना आई एम गोना फाइनेंस द डाउन पेमेंट ऑफ $375। Hamad, are you clear so far? I'll check your the text in a second, but are you clear so far? आपने ये लाजमी मेंशन करना है कि हम डाउन पेमेंट फाइनेंस करेंगे,
ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया देन ही विल थिंक दैट हम फर्स्ट पोजीशन कर रहे हैं, राइट। इसको हम फाइनेंस करेंगे और ये परचेस प्राइस होगी, ये आपसे एग्रीमेंट करेंगे लोन का 1.1 मिलियन का, और 9 साल में हम वो आपको पे कर देंगे, और हम पे करेंगे $1,700 per month. Okay, sounds good. So let me check Terry message. What did Terry said? Okay, hey Christopher. Oh, उसने आपको नहीं किया, उसने अपने सेलर को किया. Hey Christopher, I have relayed the buyer's revised financing terms to my seller. The seller is requiring a minimum down payment of 500K, with the remaining balance to be financed by the seller, due in 5-year balloon. Thank you. Um, he's out of his mind. If he needs 500,000, which property is that? Let me see. $500,000, more than 50% he needs, right? Or 271 days on the market. I mean, Hamad, you have to tell him, like, I understand you want a bigger down payment. We can, let me actually type that down. But ChatGPT से बोल के आप fix कर लेना. I understand that he wants 500,000 down payment. We can do that by financing the down payment, or else for a investment it is just not gonna make sense to put down 500,000 with such a low return. At this point my investment would be better off in stock market, full stop. Property is also listed on market for 241 days, which tells me that not many buyers would be able to buy it, full stop. Is there any wiggle room in that down payment at all, question mark. Okay, I've sent you a response. ChatGPT से बोल के थोड़ा सा उसको लिखवा दो, ताकि ये है कि बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा हार्श बोला है, तो उसको थोड़े अच्छे वर्ड्स में आप कर लें. Jared response above. I can. Okay, so this is a Jared response, guys. Let's see. I can present to the seller, but I can fairly confidently say that this won't work for the seller for few reasons. One, it's a much lower purchase price, and they will still be carrying a note. The 10-year is very long for them, so that so they have been trying to focus on 5-year term. Three, the payment per month, you lose about 5K per month in their payment to the bank, which ultimately leads to 150 loss over 10-year, plus their loss on the sale price, which I believe their current basis is over 1 million. An offer like this, while beneficial for you, would result in them losing all their capital over a slow 10-year period. Jared can you send me Jared's numbers? I don't know if I've sent you the numbers. इसकी Wellback वाली property I remember, but well, this is Wellback, but it's in Gmail. Oh, this is the one, I see. Yeah, I've been, like, the first one was June 29, I guess. I sent him an LOI. Okay.
ओके तो हमने उसको ये भेजा था, डाउन पेमेंट टू द सेलर इज 206, equity of 600,000, 10-year balloon, and 572 per month. So sir, how are you today? I'm doing good. Amna, how are you? I think we have a mic on for someone. Hussein, your mic is on. Can you please unmute it? Okay. Yeah, I mean, you have to tell him we have been. Basically, we cannot do this. Um, Hamad, what he's saying, anything else we cannot do. Send him, tell him that I will. Please present this to the seller and let me know what his counter is. I will try my best, but it doesn't look like there's anything we could do in terms of making it better for Mr. Seller. उसको ये बोल के कंफर्म कर दो, फिर वो थोड़ा सा बैक फीट पे चले जाएगा and then we can see what we need to do. The other thing also, the Indiana property, I got the quote on this. Let me show you guys how it looks like. Oh, where is that? It's not. Okay, so I'll show you guys how the bank basically do the things in terms of the rehab cost. Okay, just so you guys have a little bit of idea of what that looks like. I'm gonna send it to Homa and then open it. Okay, so this is the property analysis for this property. बैंक क्या करता है कि बैंक चेक करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की सेल हुई है, राइट? These are the properties are been sold nearby, ठीक है? Sold comes 12 महीने में 1 माइल के रेडियस से जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी रेडियस 12 माइल की, 1 माइल की रेडियस में, नॉट 12 मंथ्स के बाद पूरे साल के चेंजेस. ओके, तो अब ये इसने लिस्ट कर दिया कि ये प्रॉपर्टी सेल हुई है, ये सेल हुई, ये सेल हुई, ये सारी सेल हुई है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के आसपास, और कितनी करीब 1 माइल्स, 1.3, 1.7, 1.9 तक गई हुई विद इन 1 माइल्स. और प्रॉपर्टी सेल हुई है 128 की, देन 84, 61, 100, ब्ला ब्ला. इसका बैंक एवरेज निकालता है कि सारी प्रॉपर्टीज जो आसपास सेल हुई हैं उसका एवरेज क्या है, राइट? तो एवरेज उसका सेल हुआ है $92,000 का, ठीक है. अब जब $92,000 का वो एवरेज हुआ है तो टारगेट, ARV टारगेट का मतलब है कि वो बोल रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी को फिक्स करने के बाद के पैसे हमें कितने मिलेंगे. वो बोल रहा है 92 से 95, विच इज़ वेरी लो. हमारी ARV जो हमने निकाली थी इट्स $130,000, बट बैंक बोल रहा है नहीं, हम आपको 190 से 95 की ARV देंगे क्योंकि इतना हमें लग रहा है, ठीक है. फिर इसने एक्टिव कॉम्पिटिशन्स या कंपेरेबल्स निकाले तो इसने बताया कि भाई आपके बराबर में इंडियाना स्ट्रीट पे 3 प्रॉपर्टी लिस्टेड है और तीनों की प्रॉपर्टी 77 से लेके 59 तक है, ठीक है, और उसके बाद 89, 96 ब्ला ब्ला. तो एवरेज वो बोल रहा है कि 80,000 की लगी हुई है, ठीक है. तो अब इसने ये रिहैब की कॉस्ट भेजी है. किचन को बनाना है जिसमें कैबिनेट, काउंटर, सिंक लगेगा 6,000 का. बाथ फिक्स करना है 5,000 का वो खर्चा है. फ्लोरिंग कारपेट है इस पर तो 5,000 का वो खर्चा है. इंटीरियर पेमेंट, पेंट रिपेयर्स वगैरह 3,500 का है. HVAC, बेसमेंट, रूफ पैच. अब रूफ पैच हमने इसको पूरी चेंज करनी थी, इन्होंने सिर्फ पैचअप का किया है, विच इज़ फाइन आई गेस. विंडोज़ इसने रिप्लेस का बोला है. क्रब अपील का, पेंट का, फिक्सचर और लाइटनिंग कंटिजेंसी 3,000, ठीक है.
तो इसने ख़र्चा बताया कि 38,000 ख़र्चा आएगा आपकी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। जबकि ख़र्चा आई थिंक इट्स गोना बी एटलीस्ट 50,000 बट एनीवेज हम बैंक की बात लेके चलते हैं। बैंक ने बोला है कि आपकी घर की वैल्यू है 92,000, ठीक है। खर्चा आएगा आपके घर में 38,000, ठीक है। रिमेंबर 92,000 खर्चा आएगा 38,000। अब बात करेंगे कि हमें कितने का मिला है फिलहाल के लिए, ठीक है, विच इज़ राइट हियर, राइट। हमारी परचेज प्राइस थी जो हमने इस पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है वो 50,000 की थी। रीहैब वो 38 से बढ़ा के 40,000 का करे, अगेंस्ट 32 को यहाँ पे क्या हुआ है मीडियम और हाई रीहैब, ठीक है। तो रिहैब बाकी क्लोजिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और क्लोजिंग आउट कॉस्ट वटेवर, तो ऑल इन कॉस्ट बोल रहा है कि 92,000 पे आप ऑल इन होंगे। 50,000 पे करके आपको ये सब पे करना होता है, राइट। क्लोजिंग कॉस्ट जो मैं आपको बताता हूँ वो सब, तो आपकी पैसे बचेंगे आपके पास न, मतलब ऑल इन होंगे 50 कस्टमर को दे दिए और बाकी चीज़ें मिला के 92,000, और सेल प्राइस है 92,000 की, राइट, 92,600। तो इसका मतलब है आपके पास $610 का लॉस होगा इस प्रॉपर्टी में उनको लोन देते हुए, ठीक है। फिर इसने वर्डिक दिया बैंक ने फाइनल वर्डिक, 50,000 डज नॉट वर्क एज अ फ्लिप। वो बोल रहा है 50,000 पे फ्लिप नहीं कर सकता वर्क एट 50,000 परचेज प्राइस with 30 to 38 rehab the property losses a breakdown blah blah blah, right। असल में जब हमने 60% में लेके आए थे ना, तो तब ये सारे मसले नहीं दिखे थे हमें, सिर्फ आई थिंक 2 से 3 मसले दिखे थे जिस बैंक ने अप्रूव किया था। अब वही बैंक जब वापस जाता है तो उसने अपना चीज़ें चेंज कर ली, वो बोल रहा है कि नहीं आपकी ARV 130 नहीं है, आपकी ARV 92 है, राइट। अब बैंक का हम डर तो सकते नहीं है, हमें तो लोन लेना है, बट एनीवेज तो इस तरह उसने बोला कि फिक्स एंड फ्लिप आपका नहीं कर सकता है, नंबर 1। फिर इसने दूसरा ऑप्शन दिया बाय एंड होल्ड एंड रेंटल। अगर आप रेंट पे इसको ख़रीद के रेंट पे दे दो तो 1.6% रूल मैचअप हो जाता है जो DSCR का है, सो इट्स वर्केबल, राइट। अगर हम इसको होल्ड कर लें एज अ रेंटल प्रॉपर्टी देन इट कुड वर्क। होलसेल टू लैंडलॉर्ड नॉन रिसिवेबल असाइनमेंट 55 से 58K फी फॉर ए 5 to 8K फी, राइट। वो बोल रहा है कि अगर आप असाइनमेंट ले रहे हो तो 5 से 8K फी होगी, वो भी आपके 38,000 पे, राइट। where is it right here 38 से 32,000, राइट। तब ये प्रॉपर आपको कैश ऑफर बोला, रिकमेंडेड ऑफर टू द सेलर, उसके पास जाओ उसको ऑफर करो 28,000 से 32,000 घर के पैसे। स्वीट स्पॉट बोल रहे हैं कि आप 30,000 को उसको ऑफर करो, अगर वो 35 से ऊपर आ रहा है तो आप चले मतलब वॉक अवे कर लो, आप आगे चल जाओ, ठीक है। और होलसेल असाइनमेंट अगर बोला कि 35 का मिलता है तो देन वी कैन सेल इट फॉर 38 फॉर अ 5 to 8K फी, राइट। सो बैंक तो बोल रहा है कि आप इसको 28 पे लेके आओ। अगर हम 32 हम फॉर एग्जांपल हम अपनी असाइनमेंट फ़ी को हटाकर 35 पे भी ले आते हैं, अभी वो 50 पे है, 50 से 35 पे आना इम्पॉसिबल है कि वो आ सके, राइट। वो आएगी नहीं 50 तक, ना 38 तक आएगी, राइट। तो असाइनमेंट की वैसे भी इसमें कोई जगह है ही नहीं, इवन 500 से $1,000 की भी जगह नहीं है, राइट। अगर ये बोलता चलो 45 आपका टारगेट होता तो हम अपना असाइनमेंट ख़त्म करते एंड देन वी जस्ट गिव इट टू द इन्वेस्टर एंड देन वी विल पे यू $500 मिनिमम, राइट। बट उसकी भी जगह नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस। सो let's call the agent and let's talk to the agent and see if we can negotiate इसको मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। स्टार्ट हमने 60,000 से किया था, फिर हमने घर के अंदर जो इंस्पेक्शन हमने पहले इंस्पेक्शन करी, मेरे ख्याल में सेलर था नहीं था, रेंटर ने खोला नहीं गेट वटेवर, तो इंस्पेक्टर घर के बाहर से चीज़ें देख के आ गया। उसने बोला कि भाई मैं बाहर से देख लिया, विंडो रिप्लेस होनी है, साइडिंग ठीक होनी है, ख़र्चा आएगा कोई 20-25 हज़ार का, तो कम से कम हमें इसको 50 मिलानी पड़ेगी। हमने बोला ठीक है, हमाद ने 50 की बात करी एंड देन वी गॉट इट डन। अब संडे को ये रिपोर्ट कब बनी है, डजंट हैव अ डेट, बट संडे को अभी जो गुजरा है संडे को, उस संडे को जब बात कंफर्म हुई
तो वो बंदा अंदर गया, अंदर देख के चेक किया तो उसने बोला कि भाई हमें और भी काम करना है। पहले बेसमेंट का काम था और प्लम्बिंग का काम था, अब उसने कारपेट का भी बता दिया, उसने विंडोज़ का भी बता दिया, रूफिंग का, पैचअप का, अगेन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, जो मैंने आपको भी रिपोर्ट एक्सप्लेन करी है। तो अब हमें से बात करना है एजेंट से, और उससे फिर से नेगोशिएट करना है कि भाई हम इसको अम, कैसे हम और नीचे लेके आए, नंबर वन। और नंबर टू, घर में इतना काम है, आपने हमें डिक्लेयर क्यों नहीं किया, राइट। टेक्निकली सेलर का काम है हमको बताना कि घर में बेसमेंट का प्रॉब्लम है, इसका लीक है, उसका लीक है, विंडो बहुत पुरानी है, रूफ कुछ भी नहीं बताया था। यूजुअली हमें बताया गया था कि प्लम्बिंग का नहीं बताया था, घर पुराना बताया था, रूफ कभी भी चेंज हुई नहीं हुई वो बताया था, और आई थिंक let me see inspection. um, I can't find it in the text, but let's just call the seller. I'm honestly scared because we already got one discount, and how are we gonna get more, but let's see. Hello. Hey Andrea, how are you doing? Okay, I'm just getting ready to call you, for Oh, real. perfect, look at that, I just called you. Okay, so I actually just got the inspection report from the inspector. Did they say anything to you while they were inspecting the property? I wasn't there, I so, mean, but yeah, no, seller. no, we didn't say anything that I know to the seller. So the report they send, it doesn't look very promising, or if at all. Um, there's few things they have to send. They're major things, and they're expecting a lot of the rehab costs, and that's and then their ARV. The ARV they're getting at is about 100 and it's about 92 to $95,000. Um, Okay, $95,000. Okay. Yeah, which is very low. I don't think that is the case. So is it possible that you can pull comps from your side? I thought I already did that, but yeah, I will pull comps from Yeah, my side. because But my comps are already there online, where the property is worth $100 and some odd. $100,000 some odd dollars. It's not on my comps. It's not 90, but 90 is okay because they want yeah, to act like okay, they need to have all of these things done, repairs. This is what contractors do, and everybody who is a real estate agent know that. right, That's what they're going to do. right. So So and you the know, the rehab cost, the contractor might have sent them, and they're saying it's about $48,000. yeah. Can they send me their figures? Okay, Yeah, I need their figures. yeah, sure. And I'll then I'll I will. You said you want me to send you my okay from my MLS and all that, right? Yeah, yeah. I mean, Just the property cost. the bank does have access to MLS, but I was thinking at Zillow, and my thought process Zero. was, yeah, like the Zillow recently sold ones, and then ARV I was getting was about 110 to 130, Okay, right? that So sounds two yeah, hundred so and thirty. yeah, so 130 because there's a couple of properties that was sold Okay, in yeah, but that. that's what it's on the market. It was on the market for, That's and correct. we lowered the price. Yeah, but the bank is saying your construction your work cost is a lot and your ARV is not enough. So they're saying that this will not be a we will not give you a loan or will not take over, Okay, well, help you out with they this. won't function. Yeah, They won't function. but Okay, I got you. I talked to the person. I want Mhm. to tell them that this is wrong because they Okay. have the property from Tudor Street that's about 84,000, one from Mont Vista that's 61,000, one for 45, 41. But the problem is these are not rehabbed properties, right? They are normal properties Right. on the sell. Once we fix it Right. up, it would increase the value quite a bit. And in Cool. my calculation, we were thinking about 120 to 130, right? So Yeah. then if you put in, let's say,
I don't know, 40 something $1,000 in the rehab, 50,000 to buy it. We will be at 100,000 or a little bit under for the sell. Already. And then we will have that $30,000 margin for the closing costs, going back on the market, agent commission, things of that nature, because we still Right. have to accompany after sale process. So Yeah, we were okay. making about 15 to 16,000, and it's usually less, but we were okay with that. But then the bank brought down from 130 to 92,000, and then they're like, well, your rehab cost is still that much, and you're only gonna get 92 top dollars after fixing the property, and you will lose. They're saying you will lose about, I don't know, 600 or so dollar by with this property, with this flip. So I just want to go back to them and show them this is not the case. And if you can give me the comps of the properties that um, that prove the higher value, I can send it to them and kind of get the Okay. property value back up. Okay. Yeah. I'll do that. Would you be able I'm to gonna do find that? that for you. Yeah. Would you be able to do that today by any chance? Just so we are Yes, kind I'm of gonna do tight it on the today. inspection time. Okay. Yes, I will do that today, okay? By the end Perfect. of business day. I would I'll really try to do appreciate it that. before that. Thank you so much, Okay. Andrea. I appreciate it. All right. Thank you. Okay. Take care. Talk soon. Okay. Yep. Bye-bye. Bye. So, a couple things can happen. One, that she can bring the comps that's actually 135. ठीक है, actually 135, because प्रॉपर्टी को उसने लिस्ट किया था 135 पे, फिर उसने brought it down to 100,000 किया था, फिर हमने इसको 50,000 पे किया था, राइट? तो अगर एजेंट ने 135 लिस्ट किया है, ज़ाहिर सी बात है इसने कॉम्स देखे होंगे, और जब हमने कॉम्स देखे थे तो हमारा भी यही आ रहा था 110 से 130 कॉस्ट, ठीक है? बट बैंक और लोन वाले बोलते हैं कि नहीं, 92 से 95 से 1 रुपया आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट? एंड देन they're saying that we're gonna lose about $600 on this flip, ठीक है? अब $600 दिखने में तो उतना ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 600 है, चलो लूज़ कर लिया, कोई इतना मसला नहीं है, एक प्रॉपर्टी मिल गई। बट आप अगर अभी बैठे हुए हैं, आपने बगैर प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और आपके पास वही 600 रखे हुए, तो आप क्यों लोगे, राइट? नंबर वन। प्लस ये सारी कॉस्ट जो है ना रिहैब की एस्टिमेट्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा हरकतें करते हैं कि अब जैसे ये 600 का है तो वो उसमें 200 एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, राइट? इसमें कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, या बहुत ज़्यादा फ्रूगल हो जाएगा, इतना पे अटेंशन नहीं करेगा। एक फॉर एग्जांपल एक ड्राई वॉल है जो आई डोंट नो $100 की आती है, वो ज़ाहिर अपनी चीज़ तो है नहीं, तो वो उठाने या रखने में कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे ड्राई वॉल टूट जाए, तो वो आपका 100 का नुकसान हो गया, उसको क्या है, वो तो आपको उठा के बिल कर देगा, राइट? तो ये सारी जितनी भी कॉस्ट होती है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट होती है, इससे ज़्यादा कम ऑलमोस्ट होता रहता है, कम नहीं होता, 99% ऑफ टाइम ज़्यादा ही होता है, बट इट्स एन एस्टिमेट। सो दैट्स वाई आई कैन ईजली गारंटी कि 45 से 50 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेसमेंट का भी कोई काम, बेसमेंट को फिनिश काम नहीं किया हुआ, सिर्फ वाटर प्रूफ है। बट एनीवेज, अभी जो मैंने किया ना, इट्स अ नेगोशिएशन, मैंने नेगोशिएशन करी वो इस तरह कि मैंने बोला एजेंट को कि एजेंट खुद जाओ और जाके ढूंढो और मुझे प्रॉपर्टीज़ दो जो कंफर्म करती हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 135 है, ठीक है? अब एजेंट मुझे सेंड करता है, और एजेंट है लाइसेंस बंदा है, मुझे सेंड करेगा, मैं वो लेके जाऊंगा बैंक को, और बैंक को बताऊंगा कि भाई आपकी ये जो वैल्यू है ना ये ख़राब है, ठीक है? तो यहाँ से बैंक को ऊपर लेके आएंगे और वहाँ से एजेंट को नीचे लेके आएंगे, ओके? अगर एजेंट 50 से 40 पे चले जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़्यादा 38 तक नहीं आता, पर 50 से 40 पे चले जाता है, और हम बैंक को 92 से आई डोंट नो 110 पे ले आते हैं, राइट? सो वी आर गेटिंग क्लोज, ठीक है, वी आर गेटिंग क्लोज। तो इस तरह ये दो चीज़ें करके देखते हैं कि हम कहाँ तक लेके आ सकते हैं। अगर एजेंट चले जाता है 35 38 तक, so that's great, we can get the expense cost, सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमें वापस। अगर नहीं जाता देन बैंक को ऊपर जाना पड़ेगा 130 तक। अगर बैंक 130 तक चला जाता है then it's okay for us that way as well, but this is way too low. Usually bank are okay because we have done so many deals with them, but this is way too low. But anyways, let's see what agent says,
and I will tell you guys later, right? Okay. Um, let's see. Let me see if Hamad, any other questions? I think you got everything right. I sent you the report as well, so have a look at this to kind of have an idea of where we at. Okay, let me share the right screen. Okay. Okay, let me see who's next in the lineup. If the agent needs approval fund, what can we do? If the agent needs approval fund, say it as Michael, can you property because 25K requires repairs? Agent needs approval funds. Just do a hashtag submit. Hashtag submit. Michael, drainage properties because they ask repairs can be 25K repairs can be offered 1.6 on all 11 properties. The thing is, देखो मैंने आपको मसला आ रहा है कि कैश का, राइट? 1.0.6 प्रॉपर्टीज हैं और कैश का, राइट? आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आपके सामने की डील है ये वाली जो हमने अभी उसकी हमाद की डील थी, राइट? 50,000 का कैश है लाने का, राइट? बट इट लाइक इन्वेस्टर लिस्ट पे पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? हमारे पास कुछ पता नहीं 600 तो एटलीस्ट हैं जिन्होंने प्रूफ ऑफ फंड्स भेजा हुआ है, ठीक है? एंड डिस्पो कंपनी है, उसके पता नहीं कितने होंगे, आई डोंट नो। सब मिला के 50,000 पे कोई देने के तैयार नहीं है। इमेजिन कि हम 11 प्रॉपर्टीज ले हैं और सबको कैश पे करें, राइट? प्रॉब्लम सारा कैश का आ रहा है। अगर ये सेल्फ फाइनेंस डील होती है देन इट वुडंट बी अ इशू, ठीक है? Buyers are not taking their cash out from their pocket. They're keeping it for some reason. They're scared the market's going to go down more. And जो cash उन्होंने पैसे लगाए वो पैसे कम होंगे. Okay? So अगर हम 11 की बात करें, it's going to be very risky to sell all 11 in this market. Do you understand that? Plus हर प्रॉपर्टी में अच्छा खासा काम भी है, राइट? जब भी मैंने आपको बोला था कि हम 3 या 4 प्रॉपर्टी फोकस करते हैं जो आई नो दैट वी कैन सेल इट इफ, ताकि उसमें काम बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बिल्कुल से मुराद कोई बड़ा काम नहीं, जैसे इस प्रॉपर्टी का मैंने दिखाया था। अगर वो सेल नहीं भी होती, सो आई कैन गारंटी दैट देयर इज 2 पीपल आई नो दैट दे कैन टेक इट बिकॉज एंड आई एम गोना पार्टनर विद देम, राइट? I can bring cash for 2 properties, my personal, right? But I cannot bring cash for 11 properties. Right? So अगर हम under contract चले जाएं, we will be liable for $1.2 million. अगर नहीं होती deal, then what we gonna do? Do you understand that? There is a bigger risk. अगर 3 properties हैं, 2 properties हैं, इसमें liable थी कि अगर नहीं भी होती तो हमें पता है कि हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया, हमने इंस्पेक्शन कर ली, काम उसमें नहीं है, right? Then we can take over the deal. Personally, 2-3 investors, like I can be part of it, and then we can take it. So basically हम खुद खरीद लिया, right? मगर $1.2 million का कैश लाना इज इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? और वो जब भी मार्केट पे है अब तक, क्योंकि उसको 1.3 मिलियन का कैश कोई देगा नहीं उसको। उसके पास सिर्फ एक ही हल है कि सेलर फाइनेंस करे, वो भी इस वजह से कि वो प्रॉपर्टीज सारी रेंट पे चढ़ी हुई। अगर प्रॉपर्टीज रेंट पे नहीं होती तो वो काम भी नहीं कर सकता और फिर वो बैठा रहता, लूज करता रहता, पैसे लूज करता रहता। ओके, सो मैं एक्सप्लेनिंग इट, दैट्स वाई कि अगर 1 से 3 प्रॉपर्टी है उसका रिस्क हम उठा सकते हैं, उसको खुद बाय कर सकते हैं, राइट? 3 प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था, प्रूफ ऑफ फंड हमारे पास है, $3 लाख है, हम फिगर आउट कर लेंगे, हम खुद बाय कर लेंगे। 30 to 40 में मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। यस, अगर वो सेलर फाइनेंस सेकंड पोजीशन पे चले जाए 30 to 40%, नो प्रॉब्लम, वी कैन बाय इट एट वे। बट उसमें ये भी देख लेना कि उसकी इक्विटी कितनी थी। आई थिंक उसकी इक्विटी इतनी नहीं है सेलर फाइनेंस के लिए, राइट? सो आई रिमेंबर कि हमने पहले वो काम किया था तो इक्विटी में मसला आ गया था कि हम तो वी हैव टू बैक आउट। या सो ही ओज 1.1 मिलियन और हमारी परचेस प्राइस जा रही है 1.2 की, राइट? अगर प्रॉपर्टी वाकई में ओन 1.8 करती है,
it's a good thing, right? मगर फिर भी 40% नहीं बन रहा वो. You said at some point in time we can do. अगर देखो, अगर प्रॉपर्टी 1.1 मिलियन वो करता, ठीक है, उसने लिस्ट की हुई थी आई थिंक 1.8 मिलियन पे, ठीक है. अगर प्रॉपर्टी वाकई में 1.8 मिलियन है, मैंने आपको दिखाया, देखिए बैंक बहुत चालाक है. बैंक कभी भी पैसे आपको फ्री में नहीं देता, वो आपको पूरी अपना काम करता है फिर आपको देता है, राइट. तो बैंक कंफर्म करेगा कि एग्जैक्टली 1.18 मिलियन है, ठीक है. अगर बैंक बोलता है कि ठीक है आपकी सारी प्रॉपर्टीज वाकई में 1.8 मिलियन है, मैं आपको जितना आप लोन मानते हैं मैं उसका दे देता हूँ, राइट. अगर 40% रूल नहीं हो रहा, अगर 40% एक्विटी नहीं है, then it would be the issue, right? How much is 1.1 million of 1.1? I think it's a little bit over 40%. It is over 40%. 1.8 का half होगा 1,000. Yeah, I mean he has about I don't know, but check how much. I don't know how to calculate this really. 1.8 million and I owes. Let me ask ChatGPT. If I owe 1.1 million on a portfolio and portfolio total cost is 1.8 million, how much equity do I have in the property? Great questions. So your equity is basically the difference between the total value of the portfolio and what you owe. In this case, that's 1.8 million minus 1.1 million. So you'd have 0.7 million or 700,000 in equity. What's the percentage? I want the percentage. What's the percentage? Of course. To get the percentage, you just... Exactly. So you take your right. So you divide 700,000 by 1.8 million and then multiply it by 100. When you do that, you get about 38.89%. Okay, so 38.89%. अगर सारी प्रॉपर्टी हम उस पे लेते हैं और तो 38.9, which is very close, right? Very close. तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो ये 2-4 महीने और वेट करें हम इस पे, तो जो 38% जो इसकी एक्विटी है वो हो सकता है 40% तक पहुंच जाए 3-4 महीने में, राइट. नंबर वन चांस. सेकंड ये हो सकता है कि हम उसको रन कर ले नंबर एंड विल गो फ्रॉम देयर. हम and then hopefully the bank will come at exactly 1.8 million dollars of purchase price, right? क्योंकि अगर देखो, अगर बैंक के पास जा रहे ना तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो 25K का जो रिपेयर्स है ना वो हम आगे निकालते हैं, राइट. अगर प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है और रेंट उसका आपको मिल रहा है तो इमीडिएट रिपेयर कॉस्ट नहीं होती है. गाइस दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके. अगर प्रॉपर्टी आप कोई भी सेलर फाइनेंस की कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत काम है, आई एग्री कि काम हर प्रॉपर्टी में होता है, थोड़ा बहुत से थोड़ा ज़्यादा भी काम हो सकता है, राइट. मगर अगर रेंट पे चढ़ी हुई प्रॉपर्टी और रेंटर रह रहा है लेट्स से 2027 तक, ठीक है, तो जो भी रिहैब की कॉस्ट होगी ना वो अभी आपको नहीं लगा सकते, पहली बात, ठीक है. दूसरी बात, उसको बोलेंगे डिफर्ड रिहैब कि आप वो जब लीज ख़त्म होगी तभी कर सकते हैं, लीज से पहले नहीं कर सकते तो फिर रेंटर किधर जाएगा, राइट. तो उससे होता ये कि फिर बैंक को ये पता चलेगा कि आपको पैसे मिल रहे हैं एट द एंड अंटिल 2027, सो उसके पैसे मोर स्टेबल हैं, बैंक के पैसे मोर स्टेबल हैं, तो बैंक आपको लोन दे दे इस नाम पे कि आप डिफर्ड मेंटेनेंस कर लो, फिर आप बाद में मेंटेनेंस को शुरू कर लेना, सो वी कैन टेक इट. बट अगर उसमें लोग नहीं रह रहे और आप उसमें काम है देन देयर इज नथिंग वी कैन डू, ठीक है. उसमें कोई और बंदा आने से पहले लीगली यू हैव टू फिक्स द हाउस, ठीक है. आपको घर को बेहतर करना लाजमी होगा. What is DSCR method? DSCR is not a method, okay. DSCR, okay, DSCR is not a method.
बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग लोन देते हैं। एक बंदा लोन देता है, मेरे चचा लोन दे रहे हैं, मेरे मामू लोन दे रहे हैं, या मेरा दोस्त लोन दे रहा है, या मैं दोस्त का दोस्त मैं जानता हूँ वो मुझे लोन दे रहा है। ये सारे लोनों को जिसमें अभी मैंने बोला है उसको बोलते हैं प्राइवेट मनी। ठीक है, एक बंदे का लोन को भी अपना बंदा लोन दे रहा है। किसी ने घर सेल किया होगा, किसी की लॉटरी लगी है, किसी का कुछ हुआ है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मनी। या किसी के पास हो सकता है बिजनेस हो और वो रन कर रहा हो, जैसे स्ट्रेटजी इन है बिजनेस, वो रन कर रही है, बहुत सारे पैसे बना रही है, तो हम बोलते हैं कि ये पैसे मैं किसी और को लोन पे दे देता हूँ, वो उस पैसे से और पैसे बनाएगा और मुझे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इन सारे लोगों को प्राइवेट मनी बोलते हैं। दूसरा आता है कन्वेंशनल लोन, जो कि बैंक होता है। ठीक है, बैंक आपको लोन देता है, बट अगेन मैंने आपको बताया था कि बैंक के लोन देने में काफ़ी पंचायतें होती हैं, काफ़ी इश्यूज होते हैं। वो इस वजह से कि आपकी इनकम होनी चाहिए, इनकम को 2 साल होने चाहिए, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपको खाने के पैसे बचें, आपको बाकी नॉर्मल चीज़ें करने की बचें, राइट। तो वो आपकी देखते हैं आपकी इनकम कितनी है, कितने वक्त तक मिल रही है, और मॉर्गेज कितना मिलेगा, और आप उसको ईजिली पे कर पाओगे मॉर्गेज या नहीं। ठीक है, तो ये होती है प्राइवेट मनी। आपको पैसे दे देगा आंख बंद करके, या वो बैंक से ज़्यादा चालाक भी हो सकता है। प्राइवेट मनी का आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो बैंक से 2 हाथ आगे जाके और आपकी डील को देखेगा, राइट। या वो बोलेगा, क्योंकि अब्बू है फॉर एग्जांपल, आपके अब्बू आपको पैसे दे रहे हैं, तो अब्बू बोलेंगे ले लो। आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो डील तो नहीं देखेंगे, वो आपको बोलेंगे ले लो। या आपका दोस्त आप पे ट्रस्ट करता है, ले लो पैसे। ठीक है, तो प्राइवेट मनी में दोनों आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डीपली जाएगा, या आपको बोलेगा ले लो, मुझे उस पैसों वापस आए ना आए, मैंने इसको आपको आई डोंट नो, आपको मैंने हमेशा के दे दी। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है DSCR, विच इज़ डेट to debt service income ratio, which is right here, debt service coverage income ratio। ठीक ठीक है, ये जो लोग होते हैं इनका लेना देना आपकी इनकम से नहीं होता। ये आपके रिश्तेदार नहीं होते और आपको जानते नहीं है। ठीक है, तो पहले के जो 2 मैंने बताए थे ना, वो दोनों निकल जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ डील पे फोकस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो इस घर को देखेंगे, ये नॉर्ड एवेन्यू वाला, इसके घर के रेंटल्स मंगवाएंगे, इसके घर को अंदर से चेक करेंगे, अंदर से घर ठीक है, रहने के लायक है, और रेंट देखेंगे मार्केट का, प्रॉपर्टी की प्राइस चेक करेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि अगर मैं इस इन्वेस्टर को पैसे देता हूँ और ये इन्वेस्टर सारी चीज़ें एक्सपेंस, कैपेक्स, मेंटेनेंस, प्लम्बिंग के मसले, खिड़की के मसले, रूफ के मसले, सब कुछ कर कराने के बाद ओके मंथली पैसे बनाएगा या नहीं। अगर आंसर इज यस, देन वी कैन डू इट। फिर वो आपको लोन दे देते हैं। अब आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए होता है उसको, या आपकी इनकम नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ बेस करती है कि प्रॉपर्टी पे कितना पैसे बना रही है। ठीक है, वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी कितना पैसे बना रही है। अगर प्रॉपर्टी अच्छे खासे पैसे बना रही है तो उसको पता है कि भाई इन्वेस्टर इसको सक्सेसफुली मतलब रख लेगा। ठीक है, उनको पता है कि नहीं रखा तो हम इससे वापस लेके बेच देंगे, मगर वो ये चाहते नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं मुझे तो इंटरेस्ट आता रहे, और उनका फोकस होता है, ये नहीं होता कि बिल्डिंग को सेल परचेस करें, उनका फोकस होता है लोन के पैसों का, दैट्स इट। उनका सिस्टम उसका है, तो उनको पसंद नहीं होता कि प्रॉपर्टी वापस लेना, दैट्स व्हाई वो चेक अलॉट। मगर इनका सारा फोकस इन्वेस्टर पे नहीं होता। ठीक है, अगेन आपको फिर भी क्रेडिबिलिटी होनी लाजमी होती है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, आपके पास पैसे सारे होने चाहिए होते हैं, क्योंकि ये लोग आपसे 20% तो तब भी मांगेंगे। ठीक है, ये लोग आपसे 20% अभी के लिए मांगेंगे, तो आपको इस 1.5 मिलियन का 20% तो चाहिए। ठीक है, उसकी तो डिस्कशन हम नहीं कर रहे, बट ये आपकी इनकम नहीं देखते, ये आपकी कितने टाइम की जॉब है ये नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि भाई नॉर्ड एवेन्यू के सारे यूनिट कितने, 25 में से कितने यूनिट सेल पे हैं, वैकेंसी वगैरह सारे लगा कर कितने पैसे इन्वेस्टर बनाएगा, और अगर कंफर्टेबली उसके पास कैश फ्लो बच रहा है, लेट्स से आई डोंट नो 10,000 का कैश फ्लो बच रहा है, तो वो छूट दे देंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, तो उसको बोलते हैं DSCR, विच इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, इसमें आपका इनकम का रेशियो नहीं लिखा हुआ, इसमें आपको किसी और चीज़ का रेशियो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सो इट्स अ डेट इनकम सर्विस रेशियो। अगेन ये हमारे लिए तब भी अच्छा होगा तब हम खुद बाय करने जाएं प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब आप फ्यूचर में वी गेट टू दैट
प्लेस कि हमारे पास 20% है, तो हम डेट सर्विस इनकम रेशियो के पास भी जा सकते हैं। ये कंपनीज ये गवर्नमेंट बैक कंपनीज होती हैं, तो इसमें अगेन आपको ओनर होना चाहिए होता है, सिटीजन होना चाहिए होता है, बट अगेन अनलेस की आपकी कंपनी है, तो वो लोग हमको लोन दे देंगे, राइट। और ये लोन से इस पर नहीं देखेंगे भाई मैं कनाडा से हूँ आप पाकिस्तान से, तो नहीं इसको लोन ही दो, नहीं, वो इस पर नहीं बेफोर्स होगा, वो फोर्स इस पे होगा कि पैसे कितनी बनाती है। वो आपसे बाकी चीज़ें हो सकता है एक्स्ट्रा चीज़ें मांगे, आई डोंट नो व्हाट दैट लुक्स लाइक, बट वी कैन डू इट, ओके। तीन तीन पैसे मिलते हैं हमें, एक पैसे मिलते हैं प्राइवेट मनी से, एक पैसे मिलते हैं बैंक से, कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं डेट सर्विस इनकम रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये तीन लोगों के पैसे होते हैं। तो जो मैंने आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाई थी उसमें उसने तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तीनों इंस्पेक्शन रिपोर्ट उसने लिख के बताया कि ये आप उसको ये चीज़ें कर सकते हैं, ओके। बट आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग गाइस कि I hope you guys are learning here, okay. I'm taking a couple minutes break just so I can show you a couple things so that you guys can learn more and increase the knowledge. Okay, I'm gonna ask, मैंने इतनी बड़ी speech दी है, okay, so I'll take a quick break and I'm gonna ask a question, okay. This question is gonna be important. I need the answer from you guys, okay. um इसने दो ये बताएं, right, हम इस पे राइट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है 1.6 रूल DSC और वर्केबल, इस पे वर्क कर सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से ये जो DSCR वाला काम है हम क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते, अगर यार कोई इन्वेस्टर होता है वो अभी क्यों नहीं कर सकता। Guys, someone's mic is not muted. Hamza, your mic is not muted. Can you mute for a second? It's not Hamza, I think it's Hussein, sorry. Or is it Hamza? I'm not sure. Anyways, I have a question. Yes, Hamza, I will get to your DMs. I'm just gonna explain. I don't know how to mute someone on this app. Alright, let me ask it to mute. Okay, I think he left. Anyways, yeah, so guys, I have a question, right? कि अगर DSC बार workable है तो हम क्यों नहीं ले रहे ये चीज़, okay? Please mute the mic. I think the mic is muted. Anyways, I'll tell you guys because I think it might be difficult. Okay. अच्छा, कोई इन्वेस्टर इस घर में DSCR वाला मेथड नहीं कर रहा, वो इस वजह से, ठीक है, अगेन वो इस वजह से कि DSCR के लिए आपको घर का अच्छा होना लाजमी है, ठीक है। मैंने आपको बताया घर का अच्छा होना लाजमी है, रीहैब वाला लोन नहीं मिलेगा इस पे, मगर घर में रीहैब वाला आपको 50,000 तक का काम है घर को फिक्स करने का। सो दैट्स वाई DSCR हमको लोन नहीं देगा। वो जब अंदर जाएगा प्रॉपर्टी चेक करेगा, बोलेगा इसमें तो बहुत काम है, मैं आप इसको रेंट पे चढ़ा ही नहीं सकते इस तरह, और जब रेंट पे नहीं चढ़ा सकते तो आपको रेंट नहीं मिलेगा, और रेंट नहीं मिलेगा तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट मीन्स के पैसे वो कितना वो करता है, कवरेज रेशियो कि वो कितना कवर कर सकता है, ठीक है, वो मीट नहीं करेगा, और इस तरह आप प्रॉपर्टी लूज कर देंगे और हमें प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, फिर हमें पूरा दिमाग लगा के इसको वापस बेचनी पड़ेगी। So that's why we cannot do on this debt service income ratio. Okay. Let me go back to the questions, guys. I know you guys have been patiently waiting. Let me go back to it. Okay.
के रिपेयर था लेकिन उसमें तो है रेंटेड है 1.3 मिलियन का ऑफर है लेकिन हाँ हैदर आई नो कि वो रेंटेड है दैट्स नॉट द इशू अगर रेंटेड है तो हमें लोन मिल जाएगा उस पर सेकेंड पोजीशन का बट सेकेंड पोजीशन के लिए फिर वो 40% वाला इक्विटी बैंक बोलेगा आपकी 40% इक्विटी तो लाजमी होगी होनी चाहिए उस पर राइट तो यहाँ पे वो मसला आ रहा है वो फिर रिहैब का मसला नहीं है यहाँ पे रिहैब को तो हमने डिफ़र कर दिया राइट उस पर अगर रेंट मिल रहा है तो बैंक आई डोंट थिंक कि वो 11 प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेगा बट मोस्ट लाइकली वो रेंटल एग्रीमेंट देखेगा और बोलेगा ठीक है ये लोग रेंट पे हैं 2 साल के लिए 1 साल के लिए आई थिंक इट्स फाइन एंड देन वो लोन दे दे बट 40% का आपको करना लाजमी है ब्रो व्हाट अबाउट खोरी हुसैन let me check खोरी what happened with Cody? I never got any response. What was the update from last time? Hussein, can you come on call and speak to me on call? Just so I can, we can figure this out a little bit quicker. अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Hussein. How are you? कैसे हैं? ठीक। जी आपने कहा था कि मैं उसको कॉल करूंगा तो आप अभी उनको कॉल करें। नहीं वो जो प्रॉपर्टी लेगा आपने कहा था कि मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है मतलब थोड़ा सा रिमाइंड कराओ कि हुआ क्या था इसको हम इंटरप्राइज थी और एक और इसकी प्रॉपर्टी थी 3 प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने आपको बोला जी था कि एक प्रॉपर्टी तो बेकार है वो कहीं बिल्कुल मिडल ऑफ नो वेयर है ठीक है 2 प्रॉपर्टी हमने बोला था कि हम इसको ऑफर देंगे तो उसको ऑफर हम आपने जी। दिए तो आपने कहा था कि एंटरप्राइज पर आपने एग्री किया है अभी फिलहाल जो एंटरप्राइज 5152 स्ट्रीट है। let me pull it up enterprise वो again वो क्या था 5 5152 एंटरप्राइज स्ट्रीट। 152 this is also off market right या is it 5152 हाँ तो इसमें हमने आपने इसको ऑफर दी थी आपने इसको कितनी की ऑफर दी है आपने कहा था कि इसका टैक्स और इंश्योरेंस पूछना है लेकिन उसने मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। ओह राइट हमने इसके नंबर रन कर रहे थे वो नंबर रन करने के लिए हमें रेंट तो मिल गया था बट टैक्सेस इंश्योरेंस नहीं मिले थे क्योंकि ये ऑफ मार्केट है राइट अब अगर ऑफ मार्केट है तो इसमें आई डोंट नो कि क्या टैक्सेस इंश्योरेंस हो सकते हैं बट लेट मी सी एक और ये ऑलरेडी रेंटेड है $1025 पर। या एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी गुड थिंग हाँ इसकी टैक्सेस इंश्योरेंस नहीं है बस टैक्स असेसमेंट है विच इज़ अ डिफरेंट थिंग तो हाँ तो उसको कॉल करते हैं आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली ऑल वी कैन डू कॉल करके टैक्सेस इंश्योरेंस मांगनी है मैंने आपको शायद इसका लिंक दिया था एक और इंटरप्राइज के अलावा आई थिंक वो आर्बर थी कुछ ग्रीन आर्बर स्ट्रीट वाली ये वाली प्रॉपर्टी जी इसका आपने उसको कुछ भेजा था या उसका अभी नहीं भेजा था नहीं आपने सिर्फ इंटरप्राइज का डिटेल पूछा था कि उनसे पूछना टैक्स और इंश्योरेंस का ओके तो मैंने उसको मैसेज किया लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। आपने लास्ट मैसेज उसको कब किया था मेरे ख्याल से फ्राइडे को। फ्राइडे को और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया राइट मंडे भी गुजर गया नहीं। ओके श्योर थैंक्स हुसैन I'll call him now okay ओके। इसके नंबर का भी मसला था यार एक वो कौन सा नंबर था
इसका अपना नंबर का भी चलता नहीं है. I think I will do is that I will just call his office and talk to him. Thank you for calling Omni Realty Partners. Your call is very important to us. If you know your party's extension, you may dial it at any time, or please select from one of the following options. For assistance with buying or selling a home, press 1. If you have interest in one of our property listings, please press 2. For property management services, including owner services, press 3. And this call will be recorded for quality and training purposes. To go directly to voicemail, press star. उठा ले भाई. Let's call one more time, guys. Thank you for calling Omni Realty Partners. Your call is very important to us. If you know your party's extension, you may dial it at any time, or please select from one of the following options. For assistance with buying or selling a home, press 1. If you have interest in one of our property listings, please press 2. For property management services, including owner services, this call will be recorded for quality and training purposes. To go directly to voicemail, press star. Thank you for calling. Please leave a message and your call will be returned as soon as possible. Hey, I was looking to speak to Cody, the listing agent for Enterprise Street property, as well as Arbor Vinte. I was just following up on the discussion we have been having on these two properties. We're looking forward to um, pick up these two properties. I have sent an email um, to kind of follow up on the taxes and insurance and sort of the rent so we can run the numbers and kind of get an idea of what we are exactly will be getting into. Look forward to speaking to Cody. You can reach me back at this number. Look forward to speaking to you, or reply back to Anna. She has been assisting me with these properties. Talk soon. Bye for now. Okay, well, we leave a message for Cody office. Let's hope he responds. But again, Friday से मैसेज नहीं आया तो ठीक है. मंडे को इट्स अ लॉन्ग वीकेंड तो मंडे को भी छुट्टी थी, so I think it's okay. Maybe he will respond today. Okay,
I'll move to the next one. Can you please reply me in the DM, Hamza? Okay, Hamza, I'm looking at your DM right now. You missed a call from Hamza a few seconds ago. How to calculate that? Yes, Hamza, there are videos that बहुत सारी videos मैंने बनाई हुई हैं कि कैसे आपने calculate करना है, कैसे आपने calculate करना है अपना the rental income, ठीक है? But मैं आपको quickly go through कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है? If you can come off mic, अगर mic को आप off करके बात कर सको, that would be very good for me. Because you sent me 2 things, I have a question about that. Hamza, are you here? Yeah, I don't see him. Okay, let me quickly do Hussein because he has one more, and then I'll come back. Guys, with the mic off, it becomes so much easier for both of us, right? So that's why I always say, please do a mic off. Again, मैं मतलब मारूंगा थोड़ी ना आपको, सिर्फ फोन पे बात करनी है, that's okay. Logan, what is that? Logan, yeah, I think we have talked to them. 45, Sarah Finance 50. You called him yesterday. Now he said to call me. I want to discuss. Okay. Hussein, just give me an idea of what we offer. 45 की लिस्ट है, हमने इसको 50,000 की बोला है, 50,000 का बोला है, और आपने मंथली पेमेंट्स का कुछ बताया उसको? मैंने आपको डिटेल दी थी, आपने इसको कॉल की थी लेकिन उसने पिकअप नहीं किया था। फ्राइडे डे था तो आपने कहा कि आज मुश्किल है कि साथ बात हो जाए, तो आज ट्राई कर लें उनके साथ बात कर लें। मैं कॉल कर लेता हूँ। 50,000 का तो मुझे याद दिख गया। डाउन पेमेंट आपका पे बात हुई, डाउन पेमेंट कितनी देनी है, और क्योंकि 4 चीज़ें होती है ना, एक डाउन पेमेंट होती है, फिर मंथली पेमेंट होती है, फिर परचेज प्राइस, और फिर इंटरेस्ट और परचेज प्राइस हम इंटरेस्ट 0 है, परचेज प्राइस हमने बढ़ा दी, ठीक है? तो मुझे 2 चीज़ों का पता करना है, जो कि डाउन पेमेंट और मंथली पेमेंट। सही। आपने निकाली थी वो मंथली पेमेंट इसकी? नहीं, मैंने नहीं निकाली। दैट्स ओके। और इसका रेंट पता है आपको? रेंट वेट मैं चेक करता हूँ। रेंट चेक करो ताकि हमें फिर हम नंबर रन कर सकते हैं, ओके? जब तक आप उसको देख रहे हो, मैं क्विकली नंबर डालता हूँ। आई गेस रेंट यहाँ पे 900 लिखा हुआ है। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो सेफ थी मेरे पास। तो जस्ट मेक श्योर, ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी सेंड करें तो आप इसके नंबर कैलकुलेट कर लें। आपको ये पता है वैसे कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करना है? आपने वो रिव्यू दिया था लेकिन पूरा तरीका समझ नहीं आया। No worries, इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, so I think as soon as it's done I will show you, but I can explain a little bit quickly. यहाँ पे हमने परचेज प्राइस डाली हुई है, यहाँ पे लिस्टेड प्राइस डाली हुई है, जो चीज़ है वैसे डाली हुई है, राइट? परचेज प्राइस हम 5,000 ऊपर दे रहे हैं, और लिस्टेड प्राइस जो लिस्ट हुई हुई है ज़िलो पे, ठीक है? तो कैलकुलेटर बता रहा है आप 11% की ओवर आस्किंग कर रहे हैं, ठीक है? डाउन पेमेंट ये रही, डाउन पेमेंट हमें कितनी देनी है? हमें 10% देनी है, तो हमने 4500 दी हुई है, 9% जो कि बनती है, और हमने रेंट यहाँ पे डाल दिया है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस यहाँ पे डाल दी है, और ये चीज़ें कर ली लाजमी होती हैं जो कि आपकी 10-10-10, ठीक है? 10% मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, 10% कैपैक्स होता है, और 5% वैकेंसी होती है, ठीक है? बेसिकली इसको समझो, मैं जैसे सोचता था जब मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे पास 3 गुल्लक है, जो हर रेंट में से मैं उसमें पैसे डालता हूँ, पहले अपनी जेब में रखने से पहले पैसे मैं उसमें डालूंगा, और ये पैसे जब कोई बुरा दिन आएगा मेरे पे, मैं इनको तोड़ के यूज़ करूँगा, ठीक है?
और बुरा दिन किस शक्ल में आता है, वो कैपेक्स की शक्ल में आता है। हो सकता है 8 साल में या 9 साल में आपकी रूफ ख़राब हो गई, लीक होने लग गया, तो आपको पूरी रूफ चेंज करनी है। तो जो मैं महीना पैसे 10% इस गुल्लक में डाल रहा था बड़े एक्सपेंस के लिए, अब मैं वो गुल्लक तोड़ूंगा, उसमें से पैसे निकालूंगा और रूफ फिक्स करूंगा। मुझे जेब से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने जेब से पैसे निकाले तो इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, ठीक है। तो गुल्लक एक ये होता है। दूसरा गुल्लक होता है मैनेजमेंट का। इसमें रेंटर लाना, छोटे मोटे जो मसले होते हैं, प्लम्बिंग का मसला आ गया, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब नहीं चल रहा, व्हाटएवर, उसके मसले हल करने के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको हम 10% देते हैं रेंट का। अब ये 9,900 हमारा रेंट है, उसका 10% हम देंगे और बोलेंगे ये सारे हमारे मसले हल करो। हम पाकिस्तान में बैठे हुए या हम यूके में बैठे हुए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो वो हमारे मसले हल करते हैं, तो उस गुल्लक में रेंट पहले जाता है ताकि वो लोग प्रॉपर्टी की टेक केयर कर पाए। फिर आखिरी छोटा गुल्लक होता है जिसमें वैकेंसी होती है 5% की। इसका मतलब होता है अगर प्रॉपर्टी का जो रेंटर है वो मूव आउट हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, तो उन 2-3 महीने के लिए हमें सेलर को पैसे तो देने, राइट, वो पैसे नहीं ख़त्म कर सकते। तो हम फिर वो गुल्लक तोड़ेंगे, उसमें से वैकेंसी के पैसे निकालेंगे और सेलर को देंगे, जब तक हम कोशिश करेंगे कि नया रेंटर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का 25% हम अपने रेंट से निकाल के साइड पे रख देते हैं कि ये पैसे मेरे बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं, ठीक है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि हम इस प्रॉपर्टी में 400 बन रहा है, with 20 years amortization, 189,000 $189 दे के, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गई टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी हमारी ऑफ़र की। तो अब वो मैं इस पर कॉल करता हूँ और उससे डिस्कस करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। Let me check. Do I have this number? Hi, Happy to Realty. How may I help you? Hi, I'm looking to speak to Logan. Yes, let me see. Would you like for me to transfer you over? Yeah, if it's possible, or you can just give me his number. I can call too. I can do both for you if you'd like. Actually, I'll grab a number just in case the call dropped. Yeah, of course. Alrighty, Yeah. I have his number when you're ready. I'm ready. 586 Yeah. 477 8831. Sounds good. Thank you so much. You're welcome. Take care. Bye. Bye. Hello. Hello, is this Logan? Yes, it is. Hey, Logan. This is Syed. Me and Anna has been kind of on a communication with you on the Helen Street property. Oh, yes. Does that ring a bell? Yep, I know who you are. Yes. Yes. Yeah. So we just want to know what's the status. I think we are ready to move forward with that. I think we offered last time was 50K with 10% down and the payments planned for 84 months. Yep, the seller financing, that's no problem. I haven't presented it to my seller yet I see. because he wants to see signatures, just to make sure he's a little old-fashioned. Okay. Do you to write it up for you? Are you guys looking for me to be the
buyer agent as well on this? Yeah, if that helps for sure. However, usually seller pays the buyer's side's commission as well. If the seller is okay with the Yes, dual yeah. agency, then that's completely fine. You can represent us in the same Perfect, transaction. Yep, seller's already paid the full commission. He's already aware of that. So, yeah, Okay. I can represent you guys, no problem. It'll Okay. probably make the deal much easier anyways. For sure. Yeah. Perfect. So, yeah, I'll get that written up. Seller financing, you said 84 months, 10% down? Yes. And with the Perfect. 50K Okay. purchase price. Yep, perfect. Um, Okay, so can you text me your best email address so Sure. I can send the offer over? Sure, I'll send you the email offers along with the quick numbers on the offers as well. Just a quick question: is it currently being rented right now? The Sorry, property. say that again? Is property being rented right now? No, it's empty. It's empty. Okay. Any maintenance or deferred maintenance that you know of in the property? So the seller is out of country actually, so Okay. they don't have much info. But I've been to the house probably 5 or 6 times. Okay. The upstairs is in really good condition. It's just when you get to the basement, there's some maintenance that needs to be done. There's some water on the floor. I don't really know where it came from. I think there's a cracked window in the basement that maybe is letting some water drip in. But besides the water, I think it just needs to be cleaned up a little bit, and I think this is a great deal for whoever gets it. And you think it's rent ready? We can just come in and rent and probably look at the rehab would be later. Because if I were to come in with the rehab money, we would have to come in at cash offer because then we'll get a like a fix and flip loan on that, and they would want to be in a first position, so we cannot do the seller finance deal. If we are going on the cash route. But in a seller finance route, we probably would need the property be to sort of ready for rent, like no big repairs we can make, right? Because then for that, we will not be able to get a loan to flip the property. Yeah, I see what you mean. This property is sold as is. The seller won't be doing any repairs. You know what I mean? So, Yeah, that's completely fine. No matter no matter how you guys come up with making the purchase, whatever you have to do, that we won't really be able to help out in that sense. But Right. yeah. So whatever you're thinking, I think the seller finance offer is much stronger, has a better chance of getting the seller accepting. He's pretty firm on his 40,000 price. He really won't go anything under cash offer like that. So Right. This financing offer I think will be a lot more appealing to him. Sure. So I guess what we will do, we'll have a contingency of inspection. We'll kind of inspect the property, and then we go from there. Because all I'm worried about is just if the property is livable, right? As long as I can put the renter in and get through this 84 months, no problem at all. We could definitely do that. But if it's like a big repair, we cannot rent it before fixing it, then the offer would be a little bit issue. But again, we'll see when we get there. Awesome. And are you in the Detroit area, or are you guys out of state? No, we're out of state, so we'd be in Texas. So a bit of ways. Okay. So do you have an inspector that you'd like to use up here, or would you want me to refer someone to you? We actually have an inspector. We have a few properties in Detroit area, so we have good relations with perfect. a couple companies with the flip, like basically loan and the inspectors in the area and management as well. So we're pretty set. But I mean, if you know someone who could be better, I would definitely have a look at it and see what they have to offer. No problem at all. I just didn't want you guys to be just in the blue out here, with no contacts or anything. So if you have someone you use, that'll be perfect. I would recommend just sticking with them then. But yeah, I can get this offer written up this evening and sent over to you. Sure. Will it be in your name, or do you guys have an LLC name that you guys use? I can put LLC too. That's fine. I think I would put LLC for this offer. Yeah. Okay, perfect. So if you could just text me the name that you'd like
have the title, the LLC Right. name, and then your email so I can Sure. send it to you. Sure. That's really all we'll need. Sounds good. I'll put things ready. I'll probably get it in a couple hours if that works for you. Yeah, no problem at all. Okay. Sounds good, Logan. Then we'll chat then. You take care. Perfect. Yeah, sounds good. Looking forward to working with you, man. Let's get this done. All right. For sure. Have a safe drive. Bye for now. Sounds good. You too. Bye. I said, have a safe drive. He said, you too. Apparently, I'm driving as well. Anyways, but yeah, the only issue, I guess there's two issues. सबसे बड़ा जो है वो 2 bedroom 1 bath वाला, right? और second कि घर में अंदर में कितना काम है, right? Finger crossed, there is not much work, right? देखने में तो नहीं लग रहा, और उसने खुद भी बोला है ऊपर का यूनिट जो है it's very well done, and the basement might need work, which is okay. Basement में रहते नहीं है, मतलब रहने वाली नहीं है basement, right? So it's okay. अगर इसमें रेंटर मिल रहा है जो कि वाकई में 900 पे कर रहा है, right? अगर ये नंबर्स हमें मिलते हैं, is this the one? Yeah, अगर ये नंबर्स हमें मिलते हैं, then it is no better deal than this, right? भले वो 2 bedroom हो, but seller finance की deals, it's perfect. Like everything is good in terms of return on investment. 10% वो मान रहा है. आपको अगर आप सिर्फ 4,000 लगाओ और आपको 400 महीना मिल रहे हैं, it's not a bad deal, right? 45% cash on cash. That means within 2 years आप घर के पूरे पैसे वापस आपको मिल जाएंगे, right? आप 400 को 24 ईयर से मल्टीप्लाई करो तो आपको 45,000 आपके हाथ में हो जाएंगे, right? Which means कि आपने सारे पैसे आपके वापस आके घर गए, जितने भी आपने लगाए थे अब आप जीरो पे खड़े हो. अब जितने 400 बन रहे हैं आपके, वो आप पॉजिटिव होते जा रहे हो, वो आपकी जेब में आ रहे हैं, और आपकी इक्विटी भी घर में बढ़ रही है क्योंकि आप ज़ाहिर मिस्टर सेलर को 198 भी 189 भी पे कर रहे हो, राइट? सो overall it's a good deal. Let me send you a screenshot because I might change this later. But the only issue is the 2 bedroom. That's the thing, because 2 bedrooms are very hard to sell. But if anything, if everything is good, like the car is in top condition, everything is good, then we will buy it, right? We don't have to sell it to someone else, right? हम खुद ले लेते हैं अगर सब कुछ ठीक है, right? अच्छा, this is also one thing. आपको टेक्निकली जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो तो हमारी कंपनी लायबल हो जाती है आपकी हर डील की, ठीक है? अगर वो डील नहीं बिक रही तो हमें इसको लेने के लिए ऑलमोस्ट लाजमी हो जाता है, वरना हमें पूरे 50,000 देने पड़ेंगे या जो भी है, राइट? अनलेस कि अगर कोई इंस्पेक्शन में काम है या प्रॉपर्टी में ख़राबी है, वो एक डिफरेंट केस आ जाता है, राइट? अगर इंस्पेक्शन करवाते हैं, इंस्पेक्टर बोलता है भाई सब कुछ ठीक है, देन आप बैकआउट नहीं कर सकते. अब आप बैकआउट, आपको पैसे ला के देने हैं, आप नहीं मिल रहा आपको तो कुछ भी नहीं करके आप ला के दो, वरना आपका जो सेलर है वो हमको सू कर सकता है बहुत ईजी से, राइट? तो अगेन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है हमें फॉर एग्जांपल नहीं मिलता तो व्हाई कैंट वी बाय इट? वी कैन बाय इट, राइट? अगर 45,000 दे के 4,500 दे के आपको 400 का रिटर्न मिल रहा है, 2 साल में सारे पैसे आपके वापस आ जाते हैं, दैट इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट. इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली हमको पहले बाय करना चाहिए बगैर किसी को दिए, राइट? बट फॉर नाउ इफ यू, बिकॉज इट्स 2 bedroom, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड. अगर 3 होता देन 100%, बट 2% आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड. मगर बट मुझे पता है कि अगर नहीं चलती, कोई और नहीं लेता तो मैं ले सकता हूँ. मैं से मुराद स्ट्रेटजी इन ले सकती है या हमारे साथ जो पार्टनर हैं तो वो ले सकते हैं. बट एनीवेज, गुड डील ओवरऑल. That's a good find. We just have to get things ready. Set a reminder to text Logan about the company portfolio, proof of funds, and the name. Okay, so that's reminder set. I'll set the reminder in 2 hours. Text Logan, property, price, proof of fund, and the terms. Okay. All right, so that's done. Let me move on to the next one. Let's see, so that was the only one you have. I'll move to the next person, okay?
um man, what would it, Hussein, what happened to, what's her name, Anna? No, आगे एक और प्रॉपर्टी थी 45,000 वाली. Let me see. I think Coldwell. उसको मैंने आखिरी कॉल की थी ट्यूसडे को. आई थिंक ये ट्यूसडे, सो एक वीक हो गया. लेट्स कॉल एंड सी इफ एजेंट इज ट्राइंग टू मूव. Hi, you've reached Lauren Woodson with At Properties, Christie's International Real Estate. I'm sorry I missed your call. Please leave your name, number, and a brief message, and I'll return your call as soon as possible. I look forward to connecting. Hey Lauren, hope you're doing well. I just wanted to follow up on the property at Cordwell Street. I do know that Mr. Seller was pretty firm on at 50K purchase price. I just wanted to call and kind of say hi and see if there's any update, if Mr. Seller is willing to move. If he is willing to do that, we could do up to $45,000 in terms of purchase price, and but we will not be able to cover the closing costs from the Mr. Seller side, sorry. So 45K, and then we'll just buy the property. The seller would cover their own closing costs. Let me know if that works. We are very excited to move on this property. However, the numbers looks like doesn't work with the Mr. Seller, but I'd appreciate your response. Talk soon. Bye for now. So I was thinking कि हम इसको अगर 45 में भी देते हैं, राइट, क्योंकि इसका रेंट ठीक था. अगेन वही बात है, अगर 45 में देते हैं और जिस तरह उसने बोला प्रॉपर्टी में काम नहीं है, राइट, काम नहीं है, वो बोल रही थी कि प्रॉपर्टी में सिर्फ ये जो है ना ये इशू है, बस इससे ज़्यादा काम नहीं है, जो कि 5,000 6,000 का फिक्स है, राइट. तो अगर हम भेजते हैं किसी को, वो इंस्पेक्टर कंफर्म कर देता है कि काम नहीं है, देन और अगर आगे नहीं बिकती देन वी कैन स्टिल टेक इट, बिकॉज इसको हम रेंट पे दे सकते हैं. प्लस ये 3 बेडरूम 1 बाथरूम है. अगर 900, राइट, 900 हमें इस पे मिल जाए और $44,000 में मिल जाए और $45,000 की परचेज प्राइस है, हमारा कैश एंड कैश रिटर्न डिसेंट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पैसे लूज करेंगे. सो देन इफ इट डजंट सेल, we can figure it out and we can do something with it, okay? But again, that's something in chat. I'll respond to you, Hussein, when I get something. Okay, let's see. I'm waiting so long. This is Fahim. I'm so sorry, Fahim. I just got to your messages. I'm gonna do all your properties now, okay? Don't worry. Okay. So this is the house. Purchase price, your offer 4900, apply is under. I definitely need more details to explain this to my client. Haven't heard of strategy in how many are in your portfolio. A purchase price, creative finance. As you know, my client is looking to do a rep. She does have a balance of 241 rounding up. What would be the monthly terms and payout? I think she prefers a 5-year balloon. Agent name and number. Okay. तो असल में इस पे हम सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि इस पे लोन है, राइट. लोन कितना है? लोन बोलती है वो $241,000. ठीक है, तो बेसिकली हाफ इस पे लोन है. ऑलमोस्ट हाफ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, बट इस पे हाफ लोन है, नंबर 1. तो हम इस पे सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते. इस पे मॉर्गेज टेक ओवर होगा या हाइब्रिड डील होगी. ठीक है, मॉर्गेज टेक ओवर तब होता है तब इनकी इक्विटी लो है. ठीक है, मगर इसकी इक्विटी ऑलमोस्ट 50% है, तो हम मॉर्गेज टेक ओवर नहीं कर सकते, हमें हाइब्रिड करनी पड़ेगी. विच मीन्स हाइब्रिड का मसला होता है, जैसे होती है ना गाड़ियाँ हाइब्रिड, उसका मसला होता है कि ये 2 इंजन पे चलती हैं. एक इलेक्ट्रिक पे चलती है और एक गैस पे चलती है. इलेक्ट्रिक पे वो बैटरी चार्ज करती है जब तक गैस पे चल रही थी, फिर जब गैस बंद होती है तो इलेक्ट्रिक चलती है. ठीक है, एनीवेज, तो इस तरह हाइब्रिड डील. तो हाइब्रिड में हमें 2 बंदों का टेक केयर करना होता है. एक बंदा होता है हमारा बैंक, दूसरा होता है सेलर. तो इस पर हाइब्रिड डील लगेगी, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट
on the numbers. Okay, but the issue is Fahim, इसको ना हमें इसका मंथली बैलेंस चाहिए मुझे, राइट? जैसे ही हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हमें 3 क्वेश्चन जहन में आते हैं और तीनों का क्वेश्चन हमें एजेंट से पूछवाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कंफर्म डिटेल्स नहीं होती हैं उसकी, ठीक है? पहला क्वेश्चन कि लोन कितना है, जो हमें पता चल गया 241K लोन है। दूसरा क्वेश्चन होता है इंटरेस्ट कितना है आपके लोन पे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन होता है कितने पैसे बाकी बचे हैं, ठीक है? उसने बोला है 241 उसने पे किया है। तो अब आप ये सोच सकते हो भाई 241 अगर वो पे कर चुकी है तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि आप 241 को माइनस कर दो 410 से, 450 से, माइनस कर दो 450 से, तो 209 की इसकी इक्विटी होगी, राइट? 209,000 नहीं, ऐसा नहीं है। 450 वो अभी सेल कर रही है। उसने 10 साल पहले कितने का लोन लिया था वो डिफरेंट बात है, ठीक है? वो तो बैंक और वही जानता होगा, हमको नहीं पता होगा। अगर हम चेक कर सकते हैं, अगर ये स्टेट नहीं यहाँ पर राइट है, हम चेक कर सकते हैं प्राइस चेंज नहीं नहीं नहीं, इसने हाइड की हुई है अपनी सेल, इसने हाइड की हुई है। अच्छा, अब ये आप देखो, इसने रेंट पे लगाया हुआ था 2025 से 9 से, राइट? 2900 लगा, नहीं बिका। प्राइस चेंज करके इसने 35 कर दिया, नहीं बिका, नहीं मतलब रेंट पे नहीं चढ़ा। फिर 29 का लगाया, फिर वेट, ये प्राइस कम बढ़ा क्यों रही है? अच्छा, उसने बढ़ा, कोई रेंट पे आ गया था बंदा, फिर वो उसने छोड़ दिया 2 महीने में, 1 महीने में बल्कि नहीं, इसने छोड़ा नहीं, उसने रेंट बढ़ा दिया खुद से। आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, बट एनीवेज, तो इसने पैसे कम करके आखिरी पैसे इसने 2100 के करे, ठीक है, रेंट पे, और 2000 में भी ये घर नहीं बिका, राइट? और फिर उसने बोला अब रेंट नहीं चढ़ा, मैं इसको बेच रही हूँ। तो उसने बेचने की ठान ली और इस तरह उसने लिस्ट कर दी प्रॉपर्टी, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे लूज़ कर रही है। अगर रेंट नहीं चढ़ा, आपका मॉर्गेज जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस जा रहा है, तो आप पैसे ब्लीड कर रहे हो, आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। तो इसने प्रॉपर्टी पे इसको लगा दिया। अब मसला ये कि क्योंकि 3000, अगर फॉर एग्जांपल इसने 3000 का लगाया था, 3000 में बिक भी जाता ना, तब भी 1% रूल मीट नहीं कर रहा, ठीक है? तब भी इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी क्योंकि प्राइस इसकी बहुत हाई है। और अगर ये मल्टी फैमिली होता तो चलो ठीक है, 3000 6000 हो जाते और तब बिक जाता। बट द प्रॉब्लम इज कि प्राइस इसकी बहुत हाई है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी सेल हो नहीं रही 89 डेज से, ठीक है? तो ये बात तो आपको पता चल गई कि सेल क्यों नहीं हो रही। इसने खुद रेंट पे लगाए थे और रेंट नहीं बिक रहा। अगर 2000 का पे रेंट चढ़ भी जाता तब भी आप लूज कर रहे होते पैसे, ठीक है? नंबर 1 थिंग। दूसरी, अब इस पे मॉर्गेज है, तो अब हमें फिगर आउट करना है कि किस तरह हम, एक तो हम रेंट ही इतना कम मिल रहा है, वो करते हुए हम इसको पैसे भी दें और बैंक के पैसे भी दें, विच इज़ वेरी 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 हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है? अगर 2000 का हमें रेंट मिल रहा है इस घर पे, 4,50,000 इसकी वो है इनकम, परचेज प्राइस, इज वेरी हार्ड वी गोना मेक मनी। द ओनली वे वी हैव टू डू इट कि हम मिस्टर सेलर को कुछ भी पैसे नहीं दें और उसको बोले कि आप 8 साल का वेट करो, 8 साल के बाद जब हम बलून करेंगे तब हम आपको पैसे वापस करेंगे, जो आई डोंट थिंक कि सेलर उसको चाहेगा करना, राइट? तो उसके पास 2 ऑप्शन बचे कि या तो वो अपनी इक्विटी लूज करके मॉर्गेज टेक ओवर करके किसी को दे दे घर, कि भाई ले लो घर, मेरे एजेंट के पैसे पे कर दो और मेरी क्लोजिंग कॉस्ट पे कर दो ताकि मैं जेब से पैसे नहीं निकालूं, और तुम ले लो घर 2 लाख का, तो देन इट वुड मेक सेंस। 2 लाख का आपको 2,50,000 का घर मिल गया और 2500 का आपका रेंट आ रहा है, very good deal, a very very good deal, right? But Fahim, I'm sorry to say आप वेट कर रहे हो काफ़ी, but I cannot proceed, right? मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इसका इंश्योरेंस, इसका हमें मंथली क्या पे कर रहा है बैंक को ये लड़की, मुझे वो चाहिए, राइट? जब मुझे वो पता चल जाएगा तो फिर मैं नंबर रन कर सकता हूँ, फिर हम इसको कोई ऑफर सेंड कर सकते हैं, ओके? एक चीज़ ये है कि हम प्रॉप वायर जाके देख सकते हैं, बट प्रॉप वायर जो होता है हमेशा करेक्ट नहीं होता है।
Hello, Sir Z. Fatima. Kindly check your inbox. Sure, I'll check your inbox. Z. Yeah, it's saying 0% accurate. और ऐसा तो है नहीं, हमें पता है. वो बोल रही है कि इसकी 241 some कुछ उसको mortgage है इस पे. Right, so that's why these numbers are wrong. एक और कंपनी है Prop Stream. Prop Stream are much more accurate. Prop Stream काफ़ी accurate है, but मसला ये कि बहुत ज़्यादा expensive है. इसकी cost I don't know why it's that much, but it's $99 per month for a small tier. इस पे भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको जो हमें, अगर फॉर एग्जांपल अगर $99 पे हमको लीड्स मिल जाती हैं then sure we'll take it, मगर नहीं है ऐसा. लीड्स आपको इसमें मिलेंगी प्रो में प्रॉपर की. But anyways, let's go back to it. Okay, Fahim, so I'm gonna just shoot you a text. I need the following interest rate, monthly payment to be able to calculate monthly payment calculate करने के लिए the terms, to be able to calculate the terms that you requested. Okay, again मैंने बहुत जल्दी में राइट किया. आपसे ChatGPT से बोल के थोड़ा सा पॉलिश करा लो और उसको वापस भेज दो. उसको बोलो कि मुझे, वो बोल रही ना कि मुझे 5 साल का बलून चाहिए, मंथली पेमेंट क्या चाहिए और पे आउट कितना होगा. तो उसको बोलो ये सारे डिस्कशन को, ये सारे सवालों को आंसर देने के लिए मुझे आपकी ये 3 क्वेश्चंस का चाहिए है, जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको DM कर दिए. ओके, तो आप ये 3 क्वेश्चन कर लो एंड देन वी विल कम बैक टू दिस. एनी अपडेट ऑन दिस वन? लेट मी सी. 21219, did we call on this? Asking for us, he's interested in this offer but would like to talk about a few changes he would need. Oh, okay, perfect, let's call. Did I not call him? What is that, 7? आपने मुझे मैसेज किया था 7 पे, इतना पहले मैसेज किया था. I didn't call him. That's weird. Maybe उसने फ़ोन नहीं उठाया, I think. No record. I didn't even save his number. Yeah, I don't know why I didn't call, because everything looks good. There's no issues with the offer, and he liked the offer. Then we should have called. 210. Hey Colin, this is Syed. Me and Fahim has been working with you on a property, Wave Frere Street. Does that ring a bell? Wayfair, yeah. Yeah. Oh, it's called Wafer. Okay. Yeah, yeah. So we sent an initial offer for seller finance of about at asking price with the 10% down. Sorry, I think it's about 240 is what we offer. I remember. Yeah, I'm not looking at it, but yeah, I remember it. I responded with his counter. Oh, I thought we didn't get a counter. I thought he just, the last email I'm checking says he's interested, but he would like few changes. We would need, what do you think? Have a contact Will you number? do me a favor? Sure. Will you send me an email real quick? I can't look it up right now. Shoot Sure. me another email and just say, hey, Colin, look at this one more time. Okay. And I'll look at it when I get back to my desk. Sounds good. Sounds good. I'll do it right away. Okay. All right, thank you. All right. Talk soon. Bye.
ओके उसको शायद उसने काउंटर भेजा या नहीं भेजा या किसी और को भेजा, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आप उसको फ़हीम उसको फॉरवर्ड उसको दोबारा ईमेल कर दो और जस्ट से द सेम थिंग ही सेड, प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस ऑफर, ठीक है। और जब आप ऑफर्स को ये ईमेल कर दो, अभी करना, जैसे ये ईमेल कर दो टेक्स्ट मी, मुझे बताना, मैं उसको यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ कि आई सेंट यू द ईमेल। Let me check what number. I don't know how I didn't call on this. It looks like a good deal, but I don't have any record of this number. Okay. Oh, wait. Now I see the text. Wait. I think there's a loan on this property. I remember now. Oh, there is a loan on the property, man. Shit. And the loan payment is $3,000 per month. There's no way we can get a rent of $3,000 on this property. Oh my god, that's such a bad loan. Let me share that with you, Fahim. I don't know how I just got it. I think he sent it right away or something, but I don't know. Okay, yeah, I see the history now. I did call him. Okay, so this is the problem, right? I hate this when they don't tell you there is a loan. Okay, guys, a quick learning time right now. Statement due date is this. Total amount due is 3,1700. Okay. Now, rental estimator, अगर आप rental estimator पे जाएं ज़िलो के और ये घर लें, yeah, 50, like how are we gonna do this? 1500 पे रेंट मिल रहा है, वो भी मैं इसकी बात से मान लेता हूँ अभी 1500 रेंट मिल रहा है और बैंक को हमें पे करने हैं 3717। वो जब भी तो सेल कर रहा है ये घर को कि वो अगेन बहुत, आई डोंट नो, ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये जो जिसमें आपको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही बुरी डील है, तो ये लोग घर में रहने वाले लोग होते हैं, ये आप और मैं जैसे लोग होते हैं जिसको इन्वेस्टर आप और मैं तो नहीं होंगे, हम लोग तो इन्वेस्टर बन गए अब बेसिकली, बट एक नॉर्मल लोग होते हैं जो एना शादी हुई, घर मिला, भाई बहुत अच्छा घर लग रहा है मुझे देखने के लिए, मेरी इनकम इतनी है, मैं इसको ले लेती हूँ। अब 3,000 पे वो ले तो लिया, अब उनको ये नहीं पता कि उसका रेंट, अगर उस घर से बाहर निकलना है किसी को रेंट पे दे दें, अब रेंट पे देंगे तो फंसेंगे, राइट। 1500 है और आपको बैंक को इतना पे करना लाजमी है, तो बैंक आपको डबल मांग रहा है और हाफ उसका रेंट है, राइट। तो ये गलती जिनको नहीं पता होता, इन्वेस्टमेंट नहीं आती होती या थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं होती और वो घर ले शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो ये गलती कर देते हैं। अब जैसे अगर आप कहीं घर शॉपिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि मेरा अगर इनकम इतनी है तो मुझे बैंक कम से कम मुझसे 800 मांगे, ठीक है, मुझसे, मैं बैंक को 800 दूंगा, जितने भी पैसे बचेंगे उस पर मैं सारे खर्चे निकाल के 2-400 मेरे पास फिर भी बचेंगे, 2 से 300 बच सकते हैं मेरे पास, जो कि मैं घर लेके जाऊंगा। सो एनीवेज, अब लोन बैलेंस लिखा हुआ है $175,000 और प्रॉपर्टी की प्राइस है 270। या सो अगेन ये वो वाला सेलर है जिसको हम $0 पे बात करेंगे, हम इसको सेलर फाइनेंस भी नहीं दे सकते, राइट। आई विल टेल यू व्हाई। पैसे लगे हुए हैं, पैसे इसके पैसे लगे हुए हैं 219 के, ठीक है, 219,000 माइनस, ठीक है,
एजेंट का कमीशन इसमें अगर 10% लेट्स से 15,000 होगा कमीशन टोटल, ठीक है, -15,000 कर दिया, 1 से 5% आपकी क्लोजिंग कॉस्ट होगी, तो लेट्स डू 10,000, ठीक है, 10,000, 15,000, और क्या रहता है, दैट्स इट, राइट। नाउ 194 इसके पास पैसे बचेंगे, ठीक है, 194 पैसे बचेंगे, वो तब, ठीक है, तब जब मैं कैश लेके आऊं इतना ही जितना वो मांग रहा है, जो कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है, मैं कैश लेके आऊंगा, आई डोंट नो, मैं कम से कम 30,000 तो डिस्काउंट मांगूंगा इस पे, राइट, तो मैं लेके आऊंगा मे बी 190, या मैं लेके आऊंगा 192, राइट, 190 से ज़्यादा इसको कहीं भी कोई ऑफर नहीं मिलेगी। और अगर मैं इसमें से 190 माइनस कर दूं, क्योंकि मैं तो इतने पैसे ला रहा हूँ ना, और ये सब बच के इसके पास बच 194 रहे, राइट, तो $4,000 इसकी जेब में जाएंगे, ठीक है, वो तब तब इसको मैं सिर्फ 30,000 का डिस्काउंट दूँ, जो कि 30% नहीं बनेगा, राइट, सो दैट मीन्स इस सेलर को अगर ये सेल करता है इतने पैसों पे, तो उसको हो सकता है कुछ 10,000 से 12,000 बच जाए, जो कि इस पे बिकेगा नहीं। और इससे पहला अगर ये 2 लाख में भी सेल करता है तो उसको मुश्किल से 5,000 6,000 बचेंगे, राइट। सो अगेन ये वो सेलर है, अगर सेल कर रहा है तो प्रॉब्लम में है, सेल नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम में है, ओके। तो इनका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है, ये री इमेज, हमारी बैंक स्टेटमेंट, इतने पैसे की हम बात कर सकते हैं कि हम इतने पैसे आपको देते हैं और आपकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जगह लेने में, अब देखो 175 ज़ाहिर है हमें कैश तो नहीं देना, राइट, हमें बेसिकली लोन लेना पड़ेगा घर लेने के लिए, ठीक है, तो हम 175 का लोन लेंगे, ठीक है, एजेंट को पे करेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट पे करेंगे और हमारा घर हो जाएगा। बट इस पे हमें करना यह है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना 3.87% है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट अब आपको यूएसए में कभी नहीं मिलेगा अनलेस कि कोविड दोबारा आ जाए और कोई भी हाउस बाय ना करे। तो इस घर का सेलिंग पॉइंट ना, अच्छा सेलिंग पॉइंट होगा कि भाई 3.8% इसका सेलिंग पॉइंट है, लेट्स टेक दिस हाउस, ठीक है। तो सेलर को $0 देने, सेलर को ₹1 भी नहीं देना एक्स्ट्रा, सेलर को बोलना है कि हम आपके एजेंट के पैसे दे देंगे और आपकी क्लोजिंग कॉस्ट पे कर देंगे, एंड दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वी कैन डू। इस पर हाइब्रिड नहीं लग सकती क्योंकि इसमें इसकी इक्विटी है ही नहीं, ठीक है। द प्रॉब्लम इज अमाउंट पास्ट ड्यू इज, ओ इसने वेट अमाउंट ड्यू जो 3,000 लिखा हुआ है, मैं वही सोचा था कि अगर 3% इंटरेस्ट रेट है तो उस पर इतना ज़्यादा क्यों है, बट इसका जो एक्चुअल पेमेंट है ना मंथली वो 1,500 है, मंथली पेमेंट 1,500 है, और अगर 1,500 पे सेल होता है तो उससे गुड डील, ठीक है। तो अब ये घर और बेहतर हो गया इन्वेस्टर के लिए, सेलर के लिए बेहतर नहीं हुआ क्योंकि टेक्निकली सेलर तो उस पर पैसे लूज़ कर रहा ही होगा, क्योंकि इसने पिछले साल का भी पेमेंट नहीं पे करी हुई, पिछले महीने की पेमेंट नहीं करी हुई, तो वो पेमेंट और ये पेमेंट मिला के बोल रहा है। तो इट्स अ गुड हाउस फॉर इन्वेस्टर कि पहली बात तो ये कि इसका कैश फ्लो अच्छा है, और दूसरी बात ये कि इसका इंटरेस्ट रेट लो है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लोग जिसको रहना है घर पे और पैसे बनाना है वो भी ले सकते हैं, और ओनर ऑक्यूपाइड लोग भी हो सकते हैं, राइट। तो एजेंट को आप, आई रिमेम्बर कि इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली सेलर को बोलना है कि हम एजेंट कमीशन पे कर देंगे, क्लोजिंग कॉस्ट पे कर देंगे, और आपका घर हम आपसे ले लेंगे, और आपका जो पीछे का पैसे फंसे हुए ना हम चलो वो भी पे कर देते हैं, ठीक है। हम आपके पिछले महीने की मंथ की इनकम अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एक ही महीना है तो हम उसको ये बोल सकते हैं हम आपके महीने की पिछले महीने कंप्लीट करके डेट पे ले जाएंगे, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ले लेंगे और आपको 0 पैसे देंगे और आप इस घर से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। दैट्स अ होल आइडिया, दैट्स समथिंग वी कैन डू। फहीम जस्ट मेक श्योर टू टेक्स्ट हिम, जैसे ही आपने उसको टेक्स्ट कर दिया देन टेल मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड, अब उसको बता दूंगा कि मैंने आपको ईमेल कर दिया, बट या उसको ईमेल कर दो ताकि वो दोबारा ऊपर आ जाए। Bro, I have another agent giving him cash offer. He agreed. Kindly check the home condition and then we'll further continue. Sure, I'll get to you, Hussein. I just have to check with the Z. I think it's a Z Fatma. Yeah, Z, and then I'll check Hamza as well.
and then I'll come back to you. I'll stay longer because there's few questions that you guys have, so I'll try to finish all of them. Okay, Fahim, you got it? Yeah. So again, when you send him an email again, tell me, I will send him. इसको वापस समय में करेंगे. अभी हम इसको क्या डिटेल सेंड करें? नहीं, इसको बस बोलो दिस इज़ द ईमेल. वो ईमेल भूल गया है, तो ईमेल को वापस इनबॉक्स में लानी है, उसको बस भेज दो दिस इज़ द ईमेल और दिस इज़ द ऑफर आई हैव सेंट यू बिफोर. जब उसको बोल दोगे तो ईमेल उसके इनबॉक्स में ऊपर आ जाएगी और फिर वो रिस्पॉन्ड कर देगा. फिर मैं यहाँ से उसको मैसेज कर देता हूँ. फिर वो खुद ही बताएगा, जो भी चीज़ें बताएगा, फिर हम उसको बताएंगे कि भाई हम ये ऑफ़र करेंगे. Okay, let's go back to Z. Or is it Vinish? I think it's Z first. I don't know. Z, are you here? I want to know if Z is here. I think you are on YouTube. Z, are you here at all? If not, I'll take the other question and then come back to you, okay? Okay, who was after Z? I think Hamza. Hamza, you're here, right? Oh, no voice. Fahim, I think Hamza can hear me. Look, my voice is working. See how it moves? Okay, so let's check Hamza's deal. I think there was a couple that Hamza was working on. Okay, so this is the house. Another customer. तो ये भाई मेरी एक जी. डील रह गई है, काइंडली वो देखें, वो सबसे अहम है. किसकी आवाज़ है? फहीम आपकी? जी जी. Okay. Can I just do this and then I'll come back to you? Let me just quickly do this and then I'll come back. Okay. हमजा हमजा मैं आपको एक बात बताता हूँ. देखिए, जब भी आप फ़िल्टर सेट कर रहे हैं ना, आप शायद फ़िल्टर सेट आपने सही नहीं किया होगा. फ़िल्टर सेट देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको. कोई भी सिटी डाल के, जैसे आपने आई डोंट नो, लेट्स गो विद डिट्रॉइट. ओके, फ़िल्टर हमने सेट करने. अगेन ये काफ़ी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बट I'll tell you again. फ़िल्टर सेट पे आएगा फॉर सेल पे, ये आपने गुड किया है. परचेज प्राइस आपकी है, आपका डबल करे 136 की. ठीक है, हमने बात की थी 150 से नीचे तक, तो दैट्स आल्सो गुड, राइट? अगर हम कैश ऑफर दे रहे तो हम इसको 150 पे ले जाएंगे. बेड्स एंड बाथ 3 हमने करने हैं कम से कम, और बाथरूम एनी. ठीक है ना. मसला जो डील का है वो ये है कि ये जो है सिर्फ 1 बेड और 1 बाथ है. ठीक है, तो एक मुश्किल एक गलती हमने ये करी है कि हमने बेड सेलेक्ट नहीं करे, तो ज़िलो हमें सारी चीज़ें दे रहा है. ठीक है, नंबर 1. तो आप इसको अप्लाई कर दें तो 1 बेड 1 बाथ वाला जो मसला है ना, वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. प्रॉपर्टी टाइप. प्रॉपर्टी टाइप पे आप हाउसेस और मल्टी फैमिली यूज़ करेंगे. टाउन हाउसेस को अनचेक कर देंगे, कॉन्डोज को अनचेक कर देंगे, लॉट्स को अनचेक कर देंगे, अपार्टमेंट्स को अनचेक कर देंगे. मैन्युफैक्चर्ड को आप रख सकते हैं. मैन्युफैक्चर इज़ ऑल्सो फाइन. We did a deal a couple 5 months ago on manufactured, but apartments और lots and lands को आप हटा देंगे. ठीक है, ये जो घर है ना, ये असल में अपार्टमेंट है. ओके, इट्स नॉट. अब देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है नंबर 5206. ठीक है, इसका मतलब ये अपार्टमेंट का नंबर है, या बिल्डिंग में एक यूनिट होगा उसका नंबर है. ठीक है, तो इट्स अ बिग बिल्डिंग. पोटेंशियली मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर आप इसका गूगल देखें, बेसिकली वो यहाँ पे जाएगा नहीं, बट I'll try. Yeah, so it's not a building, but it's more like a community.
अब वो यहाँ पे अंदर नहीं जाने दे रहा मुझे, बट तो ये कम्युनिटी बनी हुई है, तो इसमें और इन सब में एक अपार्टमेंट है आपका, मेरे ख्याल से ये खिड़की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्टमेंट है। तो ये जो है ना ये वैल्यूएबल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि पहली बात तो ये आपकी HOA फ़ी आएगी, राइट, जो कि $513 HOA फ़ी है। अब आपको रेंट कितना का भी मिले, अब रेंट आपको 1000 का मिल रहा है, ठीक है, 1 बेडरूम 1 बाथरूम अपार्ट है, बहुत ज़्यादा इसका रेंट नहीं होगा, 1000 का मिल रहा है, 500 तो सिर्फ HOA ले जाता है। और HOA कौन है, ये जो प्रॉपर्टी है ये वाले ला सोलोना वाले HOA, ठीक है, ये जो HOA ला सोलोना ये ट्रीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, घर के कारपेट ठीक कर रहे होते हैं, रास्ता साफ़ कर रहे होते हैं, पूल शूल है तो वो ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे काम पार्किंग का मेक श्योर कर रहे होते हैं, कोई उल्टा सीधा पार्किंग ना करे, वो कर रहे होते हैं। तो ये लोग $500 पर मंथ आपसे मांग रहे हैं देने का, ठीक है। अब 1000 का रेंट जा रहा है, 1000 में 500 तो आपकी ये चलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करनी है अभी आप, ठीक है। तो इस डील में बहुत ज़्यादा मसले हैं बिफोर वी इवन बिगन, तो आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ गुड प्रॉपर्टी टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बस मसला ये कि हमने ये फ़िल्टर ठीक करना है, अगर आप ये फ़िल्टर ठीक कर लेना तो ज़िलो आपको ये प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं, राइट। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ, मुझे अब सब देख रहे हैं, आपको सब घर दिख रहे हैं, कोई अपार्टमेंट नहीं दिख रहा, कोई चीज़ नहीं दिख रही, तो अब आप ये घर जब इस पर ऑफ़र करेंगे तो ये घर भी ओन कर रहे हैं, नीचे का लैंड भी ओन कर रहा है, तो कोई आपको मूव नहीं कर सकता। मगर आप HOA 1 महीना नहीं पे करो, HOA का दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो आपको आके बोलेगा भाई घर से बाहर निकलो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई तंग नहीं करेगा, सिवाय अगर आप गवर्नमेंट के, अगर आप टैक्स नहीं पे करें तो गवर्नमेंट आपको घर से बाहर निकाल सकती है, तो इसमें गवर्नमेंट भी इशू करेगी, HOA भी इशू करेगा, प्लस आपका कैश रिटर्न ज़ीरो है, ज़ीरो। सी सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जो जिनको अक्ल नहीं है इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो और प्लस इतनी महंगी लगी हुई 1 बेडरूम 1 बाथरूम, ये ज़िंदगी में सेल नहीं होना, राइट। 200 दिन पे से लगी हुई है, ये 10,000 दिन और लगी रहेगी और ये सेल नहीं होगी, गारंटी यू दैट, ठीक है। ये अगर होती कोई आई डोंट नो, एरिज़ोना इज़ अ गुड स्टेट, राइट, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि ये अच्छी जगह है, वेरी नाइस लिविंग एरिया, तो मेक सेंस कर सकता है किसी के लिए, बट एट 119 नो वे। आप इसको 85 पे लेके आओ, तब जाके देखा जाएगा इस पे, राइट। बट इवन देन इस HOA आपका 500, HOA तो कम नहीं करेगा अपना फी, ओके। So yeah, so sorry to say this is not a good deal. आपको थोड़ा सा उस पर देख लें, जिस आप फिल्टर पे कर लें, राइट। अब आप देखें इसकी कितनी 503 रिजल्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ 3 बेडरूम आ रहे हैं, और जो कि 150 के अंदर है। अब आप इसको 1 महीने लगेगा आपको सारी ऑफर देने में, और उसी हर दिन में नई प्रॉपर्टीज आ रही होती है, हर दिन में नई प्रॉपर्टीज आ रही होती है, तो आपके पास कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 3 बेडरूम को कर रहा हूँ, अब मैंने एनी कर दिया तो अब 500 हो गया, स्टार्ट 500 से 300 पे चले जाता है, राइट। बट ऐसा नहीं कि आपके पास कम हो गए पैसे, बेतहाशा आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, लिस्टिंग इतनी है कि बायर के बहुत नखरे हो गए, ओके। तो रिमेंबर, आप बस इसको फिल्टर सेट करो, आई थिंक यू गोना बी ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड। And this one, sure, let me check this one. Oh, what a pretty agent. Okay, so very good. 3 bed 2 baths, exactly what we need, ठीक है। इनफैक्ट ये घर बड़ा है, 3 बेडरूम 3 बेड का यूजुअल, 3 बेडरूम 3 बेड 2 बाथ्स यूजुअली होता है 1500 का स्क्वायर फुट, ये 18 का है, वेरी गुड, ठीक है, गुड थिंग्स देयर। सो ओके, लेट मी सी व्हाट इट इज। सो सेलर फाइनेंस 160 की आपने ऑफर दी है इसको, अगेन 150 पे हमारा होता है कट ऑफ मार्क, बट 160 इज़ ओके, हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। बट अगेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिंगल फैमिली रेजिडेंस है, इसका मतलब ये घर आप ओन करते हैं, इसकी ज़मीन आप ओन करते हैं, ठीक है, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है, 3 बेड 2 बाथरूम है, गुड। सो दोज 2 थिंग्स आर गुड। अब देखते हैं एजेंट ने क्या बोला है। ओके, एजेंट बोला है, is that dear James, I look forward to your response.
पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आया, I don't know. हमजा आपका नाम जेम्स है, करेक्ट? James, thank you for the offer. ओके, तो आपका नाम जेम्स है डियर। तो इसने आपको बोला है कि 180 कैश बोल रही है। ओके, 220 से वो 180 पे आ गई है कैश, और वो बोल रही है कि मैं आपको कैश ही दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा करो। एक इशू आपका कैश ऑफर में ये था कि आप 150 से 160 पे थे, ठीक है? गिव मी 1 सेकंड यार। तो एक थोड़ा सा था कि 160 पे थे, हमें 150 कट ऑफ रखना होता है, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अब हम क्या करते हैं, हम उसको सेल्फ फाइनेंस की ऑफर देते हैं। मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि आपने ऑफर दिए सेल्फ फाइनेंस की उसको पहले? आई ऑलरेडी सेंड हर सेल्फ फाइनेंस। ओके, कब सेंड करिए? उसने मना कर दिया या फिर उसने क्या बोला, उसका रिस्पॉन्स क्या आया? This house is good. I don't think it needs work. You can rent it out almost right away. बस पेंट चाहिए होगा, क्योंकि पेंट में ध्यान रखना कि जब भी कलरफुल घर होते हैं उसमें पेंट लाजमी हो जाता है। अब ये इस इमेज का क्या तो बनता है इस प्रॉपर्टी में, राइट? ओके, I already sent her. She was asking monthly payment. Okay, that's good. If she was asking monthly payment, that means that there is interest. वो हम निकाल लेते हैं। आपने उसको सेल्फ फाइनेंस की ऑफर का आप मुझे भेजो पिक्चर की, क्या और क्या टर्म्स भेजी हैं आपने? Okay, let me quickly run it, okay? आपने कितने पैसों पे सेल्फ फाइनेंस की ऑफर दी? 220 पे या फिर 180 पे? 220 पे, मतलब एट आस्किंग दिए उससे बढ़ा ही नहीं आस्किंग से पैसे आपने, करेक्ट? या 10% ऐड किया? Um, 10%, okay. So 10%, I don't know क्या होगा, but let's do it with 5. Okay, so 10%, let's do 10% down. 24,000. $10 down, okay. Check DM, sure. Oh, interesting. Self finance proposal. That's nice. Okay, so this is the offer. One second, guys, someone's calling. Hello, this is Syed. Hey, this is Brian Spurlock with Howard Hanna. How are you? Hi, Brian. I'm doing well. How are you? I'm doing good. Did you see my email? Not yet. You have just sent it? Okay. No, I sent you one yesterday and then late last week. I just need the information that you want on the offer. So I need to know the name that you want on the contract, what contingencies you guys have, and then your closing time frame, and I can write the offers up and get them sent to you right away. I believe that was sent, wasn't it? I never received a response. 9:35 a.m. it says. So basically what I did is I just took
what you mention it, just edit it in there and send it back to you. Let's see. You said at 9:35. Yeah. And I think I put down the name, contingency, close date, inspection timeline. Let me see if it went to spam because I don't have anything at 9:35. Let's see. I mean, the time might be different because of. Yeah, the time might be different. I'm just kind of Yeah. looking around that time frame, just in general. Yeah, because we're in Texas, so it's a bit of ways. I can resend it. I mean, it's not a big deal. Let me forward you again. Oh, shoot, here it is, 11:35. I 11. totally missed this email. No worries, no I am worries. so sorry. No worries at all. Okay, so you want to use closed title? Yes, so closed title is what we've been using for a while. So the cost is a little bit decent for us because we have done quite a few transactions with them. Okay. And they have assigned us a specific agent, so. Will they match? And the only reason why I'm asking is because I have yet to find a title company that beats Title Select. They're one of the lowest in the state. Oh, is it? I mean, if they are the lowest, we need That's to the know only that reason too. why I use them. It has nothing to do with me having an ABA with them. I tell everybody I really don't care who you use for titles. My job is just to save everybody money. Sure. I mean, I can look into that. Yeah, can you ask them if they'll match? And I can send over their fee sheet, which is fine. If they'll match, then it makes sense. But, I mean, otherwise, you know, if they won't, I would suggest that you guys use Title Select just because they're cheaper. Well, I wouldn't know exactly the fees on this property until we, do the whole process thing. But Right, I title itself has their own set fees, regardless of what you're buying. Title has their own set fees. Sure. Let me talk to the agent. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Let me talk to the agent and we'll see. Okay. Yeah. Yeah. Let me know. But yeah, please send me the year sheet so I can kind of compare that as well when I get it. Perfect. Okay. I will do that. Sounds good. Thank you so much. All right. Thank you. But in the meantime, sorry, just so we don't waste time. In the meantime, you can go ahead and put the company in and just to process the things so that whatever it is, we can get that figured out very quickly. It shouldn't be a problem. Yes, sir. I'll get all that ironed out today. Awesome. Thank you, Ryan. Thank you. Jackson. Sorry for the delay. No I worries. cannot believe I missed your email. I'm so sorry about that. For sure. No worries. Talk soon. All right. Bye-bye. Bye. So this is Brian. I think this was the Youngstown 3 properties thing. Heather. I don't know if Heather is here. Why is he calling me from a different number? That's so weird. Brian Youngstown Properties portfolio. Okay, I saved it, so now I shouldn't. Yes, I'm here. Yeah, so it was just Brian. He was just talking about the properties that he's gonna figure it out. Now the 3 properties, we have to run the numbers that we can successfully take over those. Wouldn't be an issue, but yeah, if you have investor in mind, of course, I would love to have a chat with them. अगर आपके पास कोई investor है तो make sure you get this stuff, right? Like proof of funds वगैरह उससे ताकि वो confirm है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हो सकता है कोई आपको अपना investor बोले but उसके पास बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है, वो फिर बैंक के पास जाएगा, फिर अप्रूवल के लिए वेट करेगा और बैंक अगर उसको अप्रूव मना कर दे तो फिर हम फंस जाएंगे, राइट? तो उसको प्री अप्रूवल ऑलरेडी होना चाहिए. Anyways, good structure. I don't know who's this. I think it's Hamza we were working on, but very good. I like this layout. It looks beautiful, more professional. But anyways, let's go back to the so 22,000 down payment, monthly payment is structured, full refinance payout in 84 months. Okay, so yeah, I think that's good. हमारी क्या conversation हुई है उनसे? Let's see, maybe I missed a DM. Your offer is this. I forgot to tell you one thing. A big legal issue could be this. अगर आप offer किसी और company से कर रहे हैं, then they have to sign the contract. We cannot sign the contract.
राइट, योर बाय होम्स एक्सप्रेस इंक, अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन दे विल, दिस कंपनी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उनका एलएलसी पे आएगा. अगर आप इसकी जगह स्ट्रेटजी इन लिखा होता देन वी विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट, right? So figure this out if you can change this, because if the buy home access inc, आप टेक्निकली इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस वक्त, राइट? तो अगर आपने ऑफर इससे दी है और अगर आप साइन कॉन्ट्रैक्ट इनका नाम नहीं लिख रहे देन दे गोना रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर किसी ने दिए, नाम कोई और लिख रहा है. आप अपना नाम लिखो, फॉर एग्जांपल जेम्स, वो फिर भी ले लेंगे. जेम्स स्मिथ लिखोगे तो वो ले लेंगे बिकॉज आपकी ही कंपनी हो सकती है, वो ये सोचेंगे. ठीक है. दूसरी बात, जो हम बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं उस पर ये नहीं लिखा होता, राइट? बाय होम्स नहीं लिखा होगा, तो वो बोलेंगे ये कौन सी बैंक स्टेटमेंट आ रही है, ऑफर किस स्टेटमेंट की आ रही है. ठीक है. नंबर 3, जो पोर्टफोलियो भेजते हैं उस पर ये नाम नहीं लिखा होता, राइट? तो वो फिर बोलेंगे कि भाई कंपनी का नाम ये आ रहा है और पोर्टफोलियो किसी और कंपनी का आ रहा है, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. तो आप रिप्रेजेंट करो, आई थिंक अपने आप को, दैट वुड बी मेक सेंस, राइट? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि आप स्ट्रेटजी इन के एम्प्लॉय हैं, एज अ रिजल्ट स्ट्रेटजी इन इज टेक्निकली बाइंग द प्रॉपर्टी, आप स्ट्रेटजी इन के लिए काम कर रहे हो. ठीक है. बट अगर कोई और कंपनी का नाम आता है देन दे विल बी लायबल. ठीक है. और अगर आप साइन कर दें उनके नाम से तो वो लोग फंस जाएंगे और फिर बहुत बड़ी इश्यू हो जाएगा कि आपने उनका नाम यूज़ कर लिया विदाउट एनी परमिशन, राइट? सो मेक श्योर टू फिक्स द नेम. You don't have to do it right now, I guess उनको समझ में आ जाएगा, बट किसी तरह उसको फिक्स करो या उसको बताओ कि वो मेरी दूसरी कंपनी है, ये लोग लेना चाह रहे हैं XYZ. ओके. But okay, so let's go back to the deal. Yeah, so 220 is the purchase price. No, so you didn't increase the 10% up, right? So that's 220. So let me go back, which is good. You didn't increase, that means कि हम negotiate कर सकते हैं. अगर वो आगे बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट रेट तो आपने दिया नहीं, तो हम बोलेंगे ठीक है 10% देते हैं हम या 5% देते हैं, और वो सब हमारे काम का होगा, राइट? लोन अमाउंट दिस मच, 84 months 7 years. Okay. So far so good. No issues with any of your deals, right? You get 22% down. In fact, it's not good, it's great so far. ठीक है. अभी तक सारी डील स्ट्रक्चर ग्रेट है. एक चीज़ हमें चेक करना है, रेंटल. ये प्रॉपर्टी है, इसका रेंट चेक करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि रेंट हमें वाकई में उतना मिल जाए जितना हमें कैश ऑन कैश के लिए चाहिए. ठीक है. Rent looks to be okay. 1600 is a little bit less for 220, but that's okay. Let's quickly check. Okay, so there's no rentals in this area. Why does it look like it's middle of nowhere? That's the issue, right? It's a little bit of a ways from Huntsville. Huntsville is a big city. I mean, Gibsonburg is not too bad too. तो अब ये द डिस्कशन जो मेरे जहन में चल रही है वो ये चल रही है कि ये घर एक जगह पे है जो कम से कम 1.5 घंटे की ड्राइव है बड़े सिटी से, या मीडियम टाइप के सिटी एथेंस से. एथेंस मीडियम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा सिटी है, जस्ट सो यू नो. बट हंट्सविल के कंपैरिजन छोटा है. तो एथेंस सिटी है, ठीक है. वहाँ से कुछ अबाउट 30 to 45 मिनट्स है, यहाँ से 1 hour 20 minutes की राइड होगी टू गेट टू द क्लोजेस्ट टाउन. ठीक है. और जहाँ पे ये खुद रह रहे हैं, जो यहाँ पे घर है उसमें सिर्फ घर ही हैं, उसमें कुछ रहने की जगह, खाने की जगह नहीं है, मतलब कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है. इससे भी कोई रेस्टोरेंट दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, राइट?
Okay, so that could be an issue. अगर इस पे कैश होती तो I will say no. अगर कैश ऑफर हमें देनी होती तो मैं बोलता नहीं, इस पे कैश नहीं चल सकती. कोई भी इन्वेस्टर ऐसी प्रॉपर्टी पे जो दूर है सिटी से 45 मिनट या 140 मिनट उस पर पैसे लगाएगा. मगर सेल्फ फाइनेंस है, दैट्स डिफरेंट सिनेरियो. ठीक है, हमने अभी रेंट चेक करे, रेंट इस जगह पे नहीं आ रहा. क्लोजेस्ट रेंट हमें मिल रहा है जो अभी भी रेंट हुआ है इज 1.6. ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो बिट इफी कि हमको यहाँ पे कोई रेंटर मिल जाए. बट अगेन सेल्फ फाइनेंस इज स्टिल वेरी वेरी नीडेड प्रॉपर्टी. सर आपकी वॉइस इज वेरी स्लो, यूज द माइक. I'll try to use a mic tomorrow. Okay, तो हमें इसका रेंट लेट्स से 1600 लेके चलते हैं, राइट? हम 1600 डालते हैं डील में कि वो इतने का बिक जाएगा. 1600 का बिक जाएगा एंड वी नीड टू गेट व्हाट यू कॉल द रेंट एंड इंश्योरेंस. The insurance, so 70, 73, that's good. That insurance is less. 73. Okay. Okay, so at this stage, with 30-year amortization, right, it's a good deal. I don't see any problem in this right now, right? It's a good deal. All it is that I have to just change amortization to maybe 32 years, which is not a big, and it's gonna go green. Okay, 10% exactly purchase price, monthly rent, expense वगैरह निकालने के बाद 20% cash on cash, not bad. ठीक है. My next question would be, Hamza, is this rented? ये रेंट पे चढ़ी हुई है या फिर is it vacant? Is this property rented, occupied? Okay, very good. If it's occupied, then no discussion, everything is good in this deal. We just give him this offer. Okay, अब वो अगर पैसे मांग रही है तो आपने बस उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ इसका, क्योंकि इट्स अ गुड डील एंड आई वांट टू रिमेंबर कि क्या नंबर्स रन कर रहे थे हमने. ओके, आई सेंट यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नंबर्स. बेसिकली आपने उसको उसको बस ये टर्म्स देनी है, ये वाली. उसने पूछा ना क्या मंथली पेमेंट है, मंथली पेमेंट ये रही आपकी $515. इसको 500 बोल दो, $15, फिर भी आप एक और थोड़ा सा वो रख लो स्पेस. हमारे पास काफ़ी स्पेस है वैसे तो, बट या गो विद 500. ओके, गो विद 500 मंथली पेमेंट्स. 500 की पेमेंट पर मंथ आप उसको बोलो, और आपने जो डाउन पेमेंट बोली है उसी पे रहो. 500 की पेमेंट एंड दैट्स इट. ओके, I need a confirmation from you, Hamza. Did you get it? कोई क्वेश्चन नहीं है इस प्रॉपर्टी का? You're good to go? Yes, got it. Okay, perfect. So I'll move on to the next one. Um, okay, for him, I got to the company monthly payments to 20 property. I'm here pre-approval of those. No, no, not a pre-approval. Basically, अगर प्री अप्रूवल मिलता है उनको तो वो प्री अप्रूवल ले लें. घर का नहीं, या तो बैंक अकाउंट, बैंक की इंफॉर्मेशन बेसिकली उससे आप देखना, क्योंकि टेक्निकली आप लायबल हैं इस पे, तो आप देखना कि उनके पास पैसे हैं उतने, राइट? मेक श्योर करना. तो प्रूफ ऑफ फंड्स बोलते हैं उसको. उसमें प्री अप्रूवल भी आता है, बैंक स्टेटमेंट भी आता है, कोई आसपास का बंदा लोन दे रहा है तो वो भी आता है, प्राइवेट मनी भी आता है तो बैंक भी आता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें. ठीक है. स्टिल वेटिंग फॉर हिम. यस, आई विल गेट टू यू राइट नाउ. This one. Okay, so you got the let me close this first, guys. So much. Okay, yeah, so we wanted images from inside,
So you got the images. $99 बोल रहा है, ऑफर 60 की थी, his last asking was 67, please advise. हाँ, हमने लास्ट टाइम इस पे यहाँ ख़त्म करी थी बात कि हमें इमेजेस चाहिए थी, क्योंकि इसकी इमेजेस है नहीं तो हमें अंदर का नहीं पता कि कितना काम है. तो अब वो 67 बोले, 30,000 बोले, हम नहीं ले सकते. Now the images are here. Let's see how much work it would require. I don't know about the roof. Roof might need some work, but not right now. Second, let me put a charger on my. Okay, kitchen washroom needs to work. Washroom needs to work. Work a little bit. Work floor. So the roof look fine. The gutters doesn't look fine. Yeah, we might need work here too. राइट गाइस, सबसे बड़ी चीज़ होती है रूफ देखना. ठीक है, जब आप रूफ देख रहे होते हैं तो मेक श्योर कि रूफ कोई ख़राब तो नहीं है या उसका बहुत ज़्यादा कलर डल है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. और यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे कोई ब्रेक तो नहीं है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, विच इट इज़ द केस. अगर आप देखो यहाँ से तो इट डजंट लुक नॉर्मल, ठीक है. मोस्ट लाइकली विंडोज ऑल्सो नीड सम वर्क. Let's see when they replace this one. We can't read the date. Well, it looks new. The water heating system is new. That's fine. The washroom needs to be worked. It's a standalone shower, right? इस पे आप बैठ नहीं सकते, इसको सिर्फ खड़े होकर शावर ले सकते हैं. तो we will need to put bathtub. ठीक है, इसमें bathtub लगाना पड़ेगा. खड़े होकर oh right here. I guess there's 2 baths then. Yeah, it is 2 baths. Never mind. अगर 2 बाथरूम है, एक में स्टैंडिंग शावर है, एक में bathtub है, then we are good. This is the bedroom, I think. A small bedroom, the other bedroom. Yeah. It would need work, I guess. Please tell me it's rented. Fahim, is it rented? Please tell me it's rented. Say yes, Fahim. Okay, good. So if it's rented, then we could do a focus on DSCR, right? Because अगर focus on DSCR वो इस वजह से क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी आपको फॉर एग्जांपल 60 के मिल जाती है 60,000 की, इस पे जो उसका रेंट होगा वो आई थिंक 1200 होगा. But let's completely check again. या तो इसका रेंट 1200 है इस पे. अगर हमें 1100 भी मिलते हैं मरे से मरा तो वी विल स्टिल बी वेरी गुड. ठीक है, हमारा कैश एंड कैश 1100 हमें मिल रहे हैं. ठीक है, और हमें घर की प्राइस है $65,000 फॉर एग्जांपल. सो इट्स अ गुड डील, राइट. द ओनली इशू इस के घर में काम है एंड और रेंट पे देने के लिए घर को फिक्स कराना पड़ेगा रेंट पे देने के लिए, बट इट्स ऑलरेडी रेंटेड. ठीक है, so that's a good thing. Taxes and insurance 7333, not bad. So I think this is good. Overall this is good. Overall this is good. Fahim, I guess all I need you to do is to run the numbers on it. इस पे हमने करना पड़ेगा inspection लाजमी, but one second, maybe you have sent it.
आस्किंग प्राइस, ओके आस्किंग प्राइस 67 मांग रहा है, 65 भी नहीं है। आपने क्लोजिंग कॉस्ट का कार्ड इस्तेमाल किया है, जिसको हम अगर हम बोले कि हम नहीं, हम 60,000 ही देंगे मगर क्लोजिंग कॉस्ट हम पे कर देते हैं, नो। तो अब वो चेक करो एक बार, रुकना, उस पर बात करो, ठीक है। एक बात होगा हम क्लोजिंग कॉस्ट पे कर देते हैं, दूसरी बात उसको ये बोलना कि अब मैंने पिक्चर देख ली है, मैंने ये पिक्चर कॉन्ट्रैक्टर को भेजी है, वो बोलता है इसमें अच्छा खासा काम है, सो फॉर दैट आई हैव टू बी एट आई डोंट नो 55, आप 55,000 उसको बोल दो, ठीक है। अब वो उसको गुस्सा आएगा, बोलेगा मैं तो 60 पे नहीं मान रहा, तुम 55 पे ले गए हो, तो फिर वो कुछ ना वो करके बोलेगा नहीं हो सकता है 60 पे वो आपको डन कर दे, राइट। आप उसको वैलिड कॉस्ट बोल रहे हो, उसको बोलो कि भाई बाथरूम नीड्स वर्क, the flooring needs work, the roof needs work, ये 3 बिग चीज़ें हैं जो आपको काम करनी है। तो अब ये चीज़ें बोलो, उसको बोलो कि आई विल कवर द क्लोजिंग कॉस्ट भी, या तो क्लोजिंग कॉस्ट को आप छोड़ दो, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करो, रिहैब कॉस्ट की, बोल के आई विल बी एट 55, उसको गुस्सा आ जाएगा और फिर वो आके 1 सेकेंड, कोड वेल फाइनली लॉरेन की कॉल आ रही है, लेट्स सी। Hey Lauren, how you doing? I'm doing Hello? Hi, sorry. fine. Are you there? Yes, I think it's cutting in and out, but I can hear you now. Okay. Yeah. Hi. Yeah, so I kind of left a voice note kind of following up on the Cordwell Street. What's the status with the Mr. Seller? The summer still wants 50,000. He don't want to move at all, even if you're coming at 45? Yeah, 45. He wants, he's selling, he needs 50. Okay. I'll run it by him again. And I mean, I can do 60,000, but also it's going to be seller finance, and he's not that interested in that, right? Not at all. Yeah, so I was because I did some comps, and the couple that was sold in last 12 months, based on that, I think 50 would be good offer for me to be at after fixing the property, right? I would need to fix a Not few. after. Pardon? If you look at those comps, if you Right. look at the comps of this property, Mhm. 50 grand is the state that it's in now. If you fix it up nicer, you can sell it for more. Well, I was thinking of the roof. Roof will set us back a bit, but other than that, I don't think there is issue with the house itself, right? It's just the roof he really needs to replace. It has some dents in it. I think windows are fine. Everything is fine. Just the roof that was a little bit of a problematic. Um, so yeah, he don't want to budge. I guess I can see what I can do as well if you can let him know. The property is on 77 days on the market, so it kind of tells me that that would be kind of my best offer at that time. That's totally. The Yeah. thing is that if he doesn't get what he wants, he's just gonna keep it. You Oh, know what I mean? Okay, so it is rented right now? No, it's not rented Not right now. right now, okay. That is considered. Make sure everything is nice, stays nice and safe. Okay. But Well, he wants. yeah, go ahead, sorry. Sorry, he just wants 50. But I'm gonna run it by him one more time. 45. Okay. Yeah, let's do that. We'll start there. Okay. Thank you so much, Lauren. I appreciate your time. For sure. Okay. Bye. Thank you. Talk soon. Bye. Seller is not want to sell less than 50,000. अब देखो 77 डेज पे जब मार्केट होती है ना, से जब ये घर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली घर की प्राइस गिरती जा रही है। अब सेलर माने या ना माने वो उसका काम है, बट कोई भी बंदा आके देखे 77 डेज से मार्केट पे और उसको किसी ने हाथ नहीं डाला, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? द ओनली वे इट्स पॉसिबल कि इसमें कोई मसला है, इसमें कोई इशू है जो सेलर बता नहीं रहा, या इस घर की प्राइस इतनी है नहीं, वो इस वजह से बिक नहीं कर रही, बिक नहीं रही है, राइट? तो इसका मतलब है कि 60 तो उसको कभी मिलनी नहीं पड़ी। अब वो कितना भी कम करता रहे,
वो 50 पे भी चले जाएगा ना, तब भी लोग देखेंगे और ये 77 डेज मार्केट पे इसको मैं 25 की ऑफर देता हूँ। 45 इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑफर, राइट। वो भी सिर्फ इस वजह से कि इसमें काम ज़्यादा नहीं है, अंदर सिर्फ रूफ का काम है, ठीक है। अगर हम रूफ का काम करवाते हैं देन इट्स नॉट अ गुड डील, ठीक है। अगर हमको रूफ का काम कराना पड़ता है फ़ौरन से, दिस इज़ नॉट अ गुड डील। मगर अगर हम रूफ को थोड़ा 2-4 साल या 10 साल तक डिले कर देते हैं और रेंट निकाल के पैसे बनाने लग जाते हैं, देन इट्स अ गुड डील, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग। मगर अगर वो, क्योंकि रूफ में कोई लीक नहीं है, राइट, अगर इंस्पेक्टर बता देगा अगर है तो। पर आप देख सकते हैं रूफ थोड़ी सी गिर रही है यहाँ से, राइट, तो ये पूरा ये चेंज होगा और आप देख सकते हैं कितना मार्क हो गया, ब्लैक आती है और ये पूरी ग्रे हो गई है, राइट। तो आपको रूफ पता चल जाता है कि रूफ का क्या हाल है। इसके बराबर वाली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं अलॉट डार्कर, राइट, तो ये हो सकता है अभी अभी चेंज हुई हो। तो ये डार्क है, ये डार्क है, इसकी सारी ग्रे है, राइट। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो पिच डार्क आ रही है, राइट। तो ऐसी होनी चाहिए रूफ, नहीं। और इसकी ये ग्रे, उसका मतलब ये ओरिजिनल रूफ है, कभी चेंज नहीं हुई। Okay. Anyways, let's go back. I think Hussein, you probably in here, right? So you heard him. Hussein, did you hear your person? Okay. Coming back to Fahim. Yeah. So Fahim, आप उसको बोलो कि 3 चीज़ों का काम है। बाथरूम में काम है आपकी साइडिंग्स, एक्चुअली आप साइडिंग्स, बाथरूम और उसका काम बोलो रूफ का, ठीक है। और उसको 55 की ऑफर दो ताकि वो थोड़ा सा गुस्से में आएगा तो बोलेगा 60 ले लेगा, 60 पे वापस आ जाएगा। Sure, we can call, I guess, because we offer दी भी हमने, right? Let me see. Yeah, आपने उसको ऑफर दी हुई, yeah, we can definitely talk. Okay, let me see. Danica. Yeah, Danica का number I think is not the correct number. This is not Danica's number. We have to find it. तो ये रही Danica. इनका नंबर होगा डायरेक्टली right here. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hey Tanika, this is Syed. Me and Fahim has been chatting over the email on a property, Beaufort Avenue. We kind of sent an initial offer at 60,000. Again, we haven't walked the property, so we were thinking to kind of send the contractor in shortly, right after we go under contract. In terms of the pricing, I think we are still at the range of 60,000. We just spoke to our contractor. He's giving us estimates, and for that, we're thinking about to be at $55,000 for the offer. But if the 60 is approved, we can entertain that as well. But we will still need to walk the property prior to that. Let me know if you have any questions and concerns, and anything from the Mr. Steller point of view. I will make sure to entertain those things as well. Talk soon. I'll have Fahim reach out to you with a updated structure via email. Talk soon. Bye for now. Okay, Danica is busy, so let's save her number and then we'll give her a call shortly there. Probably is Beaufort.
Hey Janiga, hope you're doing well. Just left you a voice note actually about this property located at Beaufort Avenue. We've been chatting via email. What's her name? Janiga. Oh wait, it's Damika. I said Danica. Shit. We have sent an offer at 60K. Wanted to get an update on it. Okay, I texted her. She actually responded right away. She said, sorry, I can't talk right now. I missed your call. Currently in a meeting. Please text me. How can I help? So I text her the things that I told her. Okay, yeah, looking at the property, I think it would be a deal at, it would possibly a good deal at 55. Um, and we have to do the work ourselves if um, the property is in good condition. But again, we'll walk the property, send someone in, uh, and then we'll go from there. Look, pending sales 75,000, and then they went on under contract for 75,000. Okay, so they went under contract for 75,000, and then person who probably went inside, they saw it, a lot of work, and they came back. खुद ने जिसकी प्रॉपर्टी है $32,000 पे बाय करी है, राइट, 2019 से, और मुझे नहीं लगता कि इसने कोई भी इम्प्रूवमेंट करी है घर में, राइट. ये घर 2019 वाला नहीं लग रहा. 2019 बहुत अभी का घर होता है. 8 years में अगर रूफ चेंज होती तो कुछ मसला नहीं होता, पानी का मसला नहीं होता. No, so I think this is bad. We can't even go lower, right? अगर उसने ख़रीदी है 35,000 की ये प्रॉपर्टी और काम उसने कुछ किया नहीं 2019 से, how is she asking for, or how is he asking for 100,000? Yeah, I think 55,000 would be the um, best possible offer. CRUNTLY. उसका response आ गया, so I'm just gonna respond to it real quick. Currently looking at 55,000 of a purchase price with 7-day inspection, business day. Okay, उसका मैसेज है, let's go ahead and get it under contract for 60K, right? मैंने बोला था वो फौरन से एग्री, उसने फौरन एग्री कर दिया 60K का, and she said let's go under contract, but I'm gonna say that I want it at 55. ठीक है, मैं उसको ये बोलूँगा कि my contractor looked at it, he told me the pictures, it's gonna cost me quite a bit of money to fix the property, so my new purchase price would be 55. ठीक है, let's try to sell it, go under contract and try to sell it for 55. Okay, and in that 55 we'll send the contractor in. Hopefully there is no work.
Once I got the images from inside, I sent it to my contractor. Based on his calculation, we would lose about 5 to 6K if we go with 60,000 purchase price. We do not need, we do not have the representation. However, if Mr. Seller is covering the buyer's agent commission, you're welcome to represent us. Mr. Seller is covering buyer commissions as well. You are welcome to represent us in this transaction. Now, अच्छा उसका मैसेज आया कि what I'm considering is what I'm recommending is at go in the offer for 60,000 ड्यू डिलीजेंस जब आप प्रॉपर्टी को चेक करोगे फिर नेगोशिएट कर लेना 7,000 5,000 ड्यू डिलीजेंस में अभी के लिए 60 ऑफर दो. ओके ओके यार मसला ये कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट में जाने से it increase your liability, but I guess we can go under contract. 1 second, let me ask. That's fair. Is this property rented currently? Question mark. उसको बोल दिया मैंने sure that's fair 60,000 पे कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं and then we'll see कि इसको हम सेल कर पाते नहीं कर पाते, और अगर नहीं सेल होती तो फिर हम डिस्काउंट और मांगेंगे और फिर उसको दोबारा सेल करेंगे. बेसिकली दैट्स द आइडिया. और अगर रेंट पे है then it would be a good opportunity, right? Very good opportunity, easy to sell. There shouldn't be any issues with the house location because it's a big city. Oh shit. She's saying tenant has moved out and is finishing moving their items out in the next week or so. So essentially it's still tenanted, occupied, because some of the tenant's items are still in home. Shit. Shit. Would you guys be able to rent it out before the close of escrow? Close of escrow? Question mark. Let's see. अगर वो इसको रेंट पे चढ़ा दे, वो बोली कि रेंटर बाहर निकल रहा है, वो सामान उसका कुछ रह गया है. Oh shit, she said no. She said no, but you can. I'm just worried that it may have deferred maintenance, which could cause us a lot of trouble to rent it out again. To rent it out again.
No, I understand that. I was just asking in case if the seller is okay with it. Okay, so the renter is not there. It has the maintenance. Again, you have the opportunity to have your contractor come and take a look within that 7 due. No, we just wanted to make sure that it was clear. She's replying like so fast that there is no way she could text this quick. She's sending me like, look at this, big text messages, right? There's no way she can type this fast, guys. I think she's using a chat GPT or an agent and just telling the agent to reply this. Anyways, Hamza, yes, I'll check your DM. Let me just finish this. I even forgot who was I on. I think it was Fahim. Okay, yeah, Fahim, I think the best thing here would be that we go under contract, we sign the contract for 60,000, okay? At 60,000, hoping that this property is rentable. इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता. रूफ का काम है, right? रूफ आपको दिख रही है यहाँ से थोड़ा सा गिर रही है, तो रूफ का तो काम है. But we can see that if रूफ को हम थोड़ा और खींच लें, अगर 5-6 साल और खींच लें, that's okay. फिर को जो भी नया इन्वेस्टर आएगा उसको 5-6 साल का रेंट मिल जाएगा. फिर वो जो मैं आपको बताता हूँ गुल्लक, वो उस गुल्लक में इतने पैसे होंगे कि 6 साल में जाके उसको तोड़ के वो रूफ बनवा लें, ठीक है. मगर अंदर से कुछ और मसले आते हैं, जैसे कोई लीक आ जाता है, इश्यूज आ जाते हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है. बाथरूम में ये मुझे होल दिख रहा है. आई डोंट नो कि ये किस टाइप का होल है. बाथरूम may need to work. Yeah, nothing needs work other than bathroom. इसमें किचन की तस्वीर भी नहीं भेजी इसने. I don't know कि किचन का क्या हाल है. किचन का क्या हाल है, I don't know. इसमें किचन की तस्वीर नहीं है, 2 बाथरूम की तस्वीर है. But let's just go with it. Let's go under contract and इसको negotiate करेंगे. I think we probably have to be somewhere in 35. Remember that deal? I just checked the deal with you with the agent, right? हम्माद की डील चेक करी थी, right? वो भी 100,000 की लगी हुई थी. उस पर भी 10,000 का प्राइस कट था, उस पर 35 का था एक्चुअली. बट घर की हालत इतनी ख़राब है अंदर से कि यू हैव टू, वो घर को 35 पे चाहिए देन. सो आई थिंक हमको कॉन्ट्रैक्टर को भेजना पड़ेगा और उससे दिखवाना पड़ेगा घर से, और घर दिखवा के फिर हमको बंदा भेजना, फिर प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा. कम से कम 40. आई थिंक वी कैन डू समथिंग ऑन 40. अगर 10,000 की ये लगती, 12,000 की वो लगती है विंडो, 9,000 का वो बन जाएगा बाथरूम, तो 20,000, 30,000 आपके ये होगा, ठीक है. किचन में कितना है? अगर किचन में 10,000 से कम का काम है तो 40,000 ये होगा. आई थिंक विल बी गुड. 80,000 से 90,000 की हमें प्रॉपर्टी मिलेगी ये, और फिर हम इसको ऊपर बेच सकते हैं. फॉर दैट विल हैव टू चेक होम्स, ठीक है. सो बाकी फ़हीम, I guess you don't have to do anything. We have to send a contract and blah blah blah. Let me write there. Set a reminder in 2 hours to check Fahim's deal. Okay. So आज investor meeting नहीं है, so I have a little bit of time. Okay. Fahim, you're good to go. Basically आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है सिवाय follow up करने के मुझसे कि what happened, did we send the कॉन्ट्रैक्ट वो करिए. बट हमें प्रूफ ऑफ फंड्स और क्रेडिबिलिटी वगैरह बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, तो आप बस कंफर्म कर लेना कि डिड वी सेंड द मनी और नॉट द मनी बट डिड वी सेंड द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन you're good on this one. So overall this is a good property. इसमें करना ही हमें दूसरी ट्रिक आजमानी है. एक ट्रिक ये है कि आप इंस्पेक्शन के नाम पे, नॉट नाम पे, मतलब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट के नाम पे आप डिस्काउंट और ले लेते हैं, ठीक है. दूसरी ट्रिक होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ
और कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद जो आपके पास 7 दिन है प्रॉपर्टी को आगे सेल करने में, उसमें आप इंस्पेक्शन करो, ठीक है। इंस्पेक्शन करके फिर दोबारा नेगोशिएट करो, ठीक है। बट उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो अब आप लाइबल हो टेक्निकली। बट इट डजंट मीन कि हम उसको हम जाते हैं बोलते नहीं हम आपको 35 की देंगे और वो नहीं मानता तो वी कैन बैक आउट एज वेल, राइट। मगर अगर काम नहीं निकलता देन इट्स एन इशू। बट एनीवेज हम कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसको सेल करने का आगे। I don't have a meeting today, but tomorrow I'll talk to investors who wants to buy. I will call a couple that I know who buy in this town. Okay, let's go back to the next person, guys. I know I'm getting too excited because a lot of good deals today. Hamza sent me a message. Check DM. Hamza said I'll check yours. I think that's the only one. सैयद माइकल ने आपको 25 के रिपेयर का हमारी पोर्टफोलियो कैलकुलेशन के बाद बताया था। नहीं, उसने जनरल बताया था कि 25 के एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, एवरेज बताया था। इसका मतलब ये नहीं कि हर 11 प्रॉपर्टी में 25 के का काम है, उसमें सिर्फ एक में 25 का होगा, एक में 10 का होगा, एक में 50 का होगा, वो इस तरह की बात कर रहा था। आई थिंक उसने आपको बताया था ना स्टार्ट में, जिसमें आपने उसको लगाया ही 50% पे था, राइट, 50% ऑफ पे लगाया था, फिर आपने उसको 60 पे लेके गए थे, कुछ ऐसा था, आई डोंट रिमेंबर। 0.6 से इम्पोर्टेंट ऑन माइकल प्रॉपर्टीज बिकॉज वी आर नो श्योर अबाउट द लोन। 0.6 इम्पोर्टेंट ऑन द माइकल प्रॉपर्टी बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द लोन। लोन तो यार वो आई थिंक लोन तो उसको पता है ना, 1.1 अगर वो खुद बोल रहा है, so I think that's a loan. Do you pay also to provide the investors to you? We don't. Investor just look at the videos and they come in. उसको हम check करते हैं. But we haven't paid any one investor. But I mean, if the investor is actually buying the property, he will pay for whoever brings it. That's not a problem. The money is not an issue, Heather. Technically, the money is not ours to pay, right? हमारा काम डील लाना है, तो उस डील में से पैसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो अगर पैसे बच रहे हैं, then there is no issue with sending out. But ऐसी डील है जिसमें काम इतना निकल के आ गया, आपकी असाइनमेंट स्क्वीज हो रहा है, 500 भी नहीं निकल पा रहे, then we have to pay 500 from our own pocket, right? Then it's a different issue. But अगर उसमें असाइनमेंट निकल रहा है, रेफरल फी निकल रही है, there's no problem. Bro, I have okay. I'll go with Hamza and then I'll take Hussein yours. Okay, I'll go with Hamza first and then I'll go Hussein yours. Okay. Okay. So 75K की प्रॉपर्टी है. Okay. Alabama. Property looks good. Look at this, guys. The roof, right? Again, roof का कलर आपने नोट करना होता है. Look at this. आधी roof उसने करी हुई, आधी नहीं करी हुई. I don't know what's happened there, but तो roof 110% change होगी, and I think we have to do the full roof. ठीक है? घर अंदर से उसने ठीक कर दिया है. Look at this. Yeah, घर अंदर से उसने fix कर दिया है. Countertops are good. Everything is good. What उन्होंने शायद रूफ बना रहे थे और रूफ बनाते बनाते पैसे ख़त्म हो गए, and they are selling the property. That's probably the only possible reason. वॉशरूम का मिरर चेक करना है. Yeah, I mean this is good. This is good. Just roof technically हमें change करना है और उसका काम है. Step the beautiful in the time. Wait. Appliance package. Choose between an appliance package installation, add closing, or credit to pick your own. Okay.
तो वो अप्लायंसेस लगा के देंगे क्लोजिंग के वक्त. So what's that to massively okay, okay. So okay, that's what I was thinking. कोई मुझे फ्रिज नहीं दिखा इसमें, ना स्टोव दिखा, तो वो उसके पैसे दे देंगे. चलो वो तो ठीक है. Okay, let's see the location of the घर. Location of the घर is good or not? Location is good. Montgomery is a good place for investment and has a smaller price housing, which is good. No HOA, 3 2 bedroom. So far everything is good in this except the roof, right? The roof I mentioned is going to be about 12 to 15 maximum. 15 maximum, 12 minimum. Okay, तो आपका कमेंट मैंने पढ़ा है कि I offered her 50K, इसमें 50,000 भेजा ऑफर. She countered me 65. She countered me 65. Okay, what should I do? Okay, one thing मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिस्काउंट तो यार मुझे उसने सिर्फ 10,000 कम किया, मगर मैंने किसी को देखा था उसकी 2,000 की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी और वो लेके आ गया था 150. उसने 50,000 डिस्काउंट दिया था, मुझे सिर्फ 10,000 मिल रहा है. ऐसा नहीं होता. परचेज प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती है वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं कम डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ बड़ा वाले बंदे से. अगर उसकी परचेज प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिस्काउंट के नंबर भी बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है. आपकी परचेज प्राइस सिर्फ 75,000 है तो आपका जो 70.7 का फॉर्मूला होगा वो 52,000 पे होगा. ठीक है, विच इज़ नॉट बैड. क्यों? क्योंकि घर अंदर से तो ठीक है, सिर्फ रूफ का मसला. और आपने उसको 50 बोला था, उसने आपको फिर 60. आपने उसको 50 बोला था, उसने फिर 65 किया था. 75 से 65 तो मुश्किल होगा. I think 65 we can't do. The maximum we could go would be the 50. Right? Here's why. 50,000 में हमें फिर इसकी रूफ भी बनानी है जो कि 65 तक हमें पहुंचा देगी. राइट? और अगर घर में कुछ भी काम नहीं होता, एवरीथिंग इज़ ब्रांड न्यू, हम दोबारा मार्केट पे लगाते हैं तो हम मार्केट पे इसको 80,000 की लगाएंगे, 90,000 की लगाएंगे, तो इट्स अ स्मॉल प्रॉफिट बट इट इज़ अ प्रॉफिट. तो समबडी स्टिल वांट पिक दिस अप. कोई पिक कर लेगा उसको. एक्चुअली लेट मी टॉक टू सारा. Hamza, you are James, right? Just to confirm. वो उसका नंबर इसकी ईमेल पे है. ओके, ये रहा उसका नंबर. Okay, let's call this again and इसका नंबर है. Realty, this is Hey, is this Sarah? This is Sarah. How can I help you? Hey Sarah, this is Syed. I think me and James have been working on this property with you on the Gap Loop, Montgomery. Does that ring a bell? Guest like first. It's a Gap Loop. I'm not sure exactly. 10. North Gap Loop? Yeah, north. Sorry. 1024. Okay. Yes. You got it. Yeah, so I think the last offer we sent in was around I think 60,000, and then I think seller countered at it was a 50,000, seller countered at 60. I just want to know what's the extent of work it has in terms of the roof. Okay, so
I wasn't involved with her doing any of the repairs before Okay. before I listed it, but I can tell you she had the repairs done to the roof that were suggested by a licensed roofer, and so it Okay. looks like they replaced it like a patch of roof Yeah. versus like the whole roof. Right. So the roofer recommended, a licensed roofer recommended to fix that patch, and they fixed it. So it's pretty much up to code right now in terms of roof. Exactly. Okay. So there's one more patch I see that's kind of grayish. So they probably got that. They didn't get it fixed. They just, but it's good to go. No Yeah. immediate repair required. Correct. Okay. Okay. So that's good. And in terms of the house from inside, I see it looks like it's completely done, properly rehabbed. So I think there's not much to do in there as well, correct? All right. Yeah. And then I see that they're okay to put in the fridge and stove, I believe, at closing. Fridge, stove, and air conditioner can be installed either the day of closing or an allowance given to the buyer to do it after closing. Okay, sure. And in terms of the rental states, there's no tenant in it right now? Correct. It is vacant. Okay, very well. And can I don't know if you know this, but I just want to have a sense of what kind of rent we are getting in the area. About 800. 800, okay. So 3-2, about 800. And that's with the rehab property, correct? It is already rehabbed other than the AC being The installed AC and thing, the yeah. appliances being installed. Yeah. Right. Otherwise, it's good to go. Okay. Now, actually, there was one window that someone broke out that we boarded up, so that is the only other thing that will need to be done. Okay. Oh, it's broken. I thought it just covered just for protection because it's vacant. Correct. Okay. Okay, yeah, sounds good. So, and you think that that would be the final offer for seller? Like he will not budge from the 67, I think you offered. He offered countered. She might. She might come down just a hair more, but not much. Okay. Okay. Because I haven't sent this to my contractor, but usually what we do, we don't do any deferred maintenance. So if we were to come in, we probably will get that half patch removed and get it fixed and keep it completely new, and then we are good for next 10 years at least, right? So then we just focus on rentals for that. But yeah, I will definitely run the numbers again with my contractor in probably a couple hours and kind of give you an idea of where we will be. I'll try to make sure to come up from 50 and kind of shoot you a concrete one in a bit, okay? That sounds great. Well, I look forward to seeing it, and I will talk with you at that time. Awesome. Thank you, sir. I appreciate your time. No problem. Have a good day. Bye for now. Okay. वो बोलती है कि ये जो हिस्सा है, even though I can see a big fat hole in it, right? मुझे यहाँ से इतना बड़ा hole दिख रहा है, but she's saying it's up to the code, right? अगर ऐसा है कि लाइसेंस realtor ने लाइसेंस रूफर ने ये काम किया हुआ है, तो I think he's not gonna lie, but मुझे देखने में इतना बड़ा होल दिख रहा है. What's going on? So I am kind of worried, but even then अगर आप देखा जाए आधी रूफ तो हुई हुई है, right? So that's a positive sign for us. So that's a positive sign for us. आधी रूफ हुई हुई है, आधी करनी है. So अगर 12,000 की कॉस्ट आ रही है, तो I think we might have to do like, I don't know, 6,000 on it, right? और एक विंडो ठीक करनी है, तो I don't know how much one window would cost, but $500, I don't know, nothing more. Okay, so I think this is also good. This is also I like this everything. There's no issue with it. City is big, 3-bedroom, 2. The price, so the rent, अगर हमें 800 का रेंट मिलता है और इस प्रॉपर्टी को हम 50 पे लेके आते हैं और उससे 50 पे डील डन करते हैं, then it's a great property. Even at 55 it will be a good as well. ठीक है? So हम क्या करेंगे, हम उसको आज कुछ भी सेंड नहीं करेंगे, हम उसको कल सेंड करेंगे. और कौन सेंड करेगा? I think Hamza, you are the one on it, right?
So Hamza, send them the offer of $52,000. Okay, $52,000. और उसको बोलो कि I will pay the closing cost on it. ठीक है? I'll pay $52,000, 52,000 and pay the closing cost. And then but not the agent commission. ठीक है? Remember, agent commission की बात नहीं करना, but 50 आप 2,000 ऊपर आ जाओ. असल में अगर आप देखा जाए ना, generally देखा जाए तो it's a good deal for investor at, let's say 60, 67, 65 उसने बोले, at 65, right? बट मार्केट अभी इतनी बुरी है कि आपको इससे बेहतर काम करना है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं ताकि जब इन्वेस्टर इस प्रॉपर्टी में दाखिल होगा, डे 1 से उसके पास एक्विटी होगी घर की. वो किस वजह से, घर लगा हुआ 75 का था, तो अगर 75 का नहीं बिका तो लेट्स से 65 का बिक जाना था. ठीक है? और 65 उसने खुद ही एग्री कर लिए, तो घर की वैल्यू होगी 65 से 68 के दरमियान. हम लेके आए हैं 50 के, तो हमने 18,000 की एक्विटी सेलर को, बायर को प्लेट में रख के दे दी. ठीक है, नंबर 1. सेकंड, ये घर फुली डन है तो उसको कुछ करना नहीं है. सेकंड थिंग है इसको रेंट. ठीक है, रेंट 800 का है, क्योंकि 50,000 का घर लेके आ रहे हैं या 52 का लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी रेंट 8,000 और पे इसको मॉर्गेज, इसका मॉर्गेज होगा 300 का, 300, 350 या 400 का में भी मॉर्गेज. तो उसको अच्छे खासे पैसे बचेंगे. ठीक है, तो हम दोनों तरफ से फ़ायदा लेके आ रहे हैं. एक एक्विटी, उसको डे 1 से 18,000 की एक्विटी मिल रही है कि अगर उसको कल भी बेचे और वेट करके बेचे, फॉरन नहीं, मतलब बट उसको 18,000 की एक्विटी मिल सकती है. ठीक है, जो कि है 65,000 तक वो आ सकता है. और ज़ाहिर रेंटर तो रेंटर है. ओके, सो हमजा, write an email and schedule it for tomorrow. Do not send it today. ठीक है, कल उसको बोलना we can do, the best we can do is 52,000 and we will throw in closing cost as well. ठीक है, not the agent commission but closing cost. That's it. और फिर उसको एक दिन वेट करके then next time हम उससे दोबारा डिस्कस करेंगे. But it's a good deal. I will save, I already saved her number, so I think we're good. Oh, we didn't. Okay, 1 second. Create a new contact. Okay, so that's good. Let's go back. Okay, bro, I've sent you. Okay, I sent you something. Yeah, I sent you something. It's been a while. What's it? 12:30. Good thing I don't have a meeting today. How long was the class? Class has been 4 hours right now, or is it 3 hours? More than 3 hours. But we still have property, so I'll try to figure out as much as I can. 60,000 Cleveland, everything good. 47. Good. Yeah, no issue here. Little bit close to the big highway. A little bit close, but not too much. Okay, everything goes good. Let's see what Hussein said. Shane raid number, list price, cash offer 42. Bro, agent like our cash offer, kindly ask its condition, then we can continue further. He also asked for proof of fund offer terms also, if you can also call him and discuss it. Sure. What's your name, agent? Shane. Let's see the property. Yeah, roof needs, like, again, this siding needs work, right? Because I don't know if it's burn or what is that. Yeah, needs some work. The ceiling needs work, guys. Ceiling work. Kitchen needs work.
Yeah, so let's see what offer did you give him. 42. Oh, it will be tough on 42. Kitchen is 10. At least अगर उसके appliances ठीक हैं तो appliances है ही नहीं, वो appliances भी ले गया भाई, वो appliances भी ले गया वो. So 13 there. 13. This is so bad. Look at the wiring, guys. It's on top of the house. We have to do the wiring. That's a big expense. Yeah, this house is pretty cooked. Under se paka hua hai basically. Look at the back. It's very bad condition. How many is listed on the market? Yeah, it kind of makes sense. Let's see, there's a lot of the house with the great potential. Exterior already offers a low maintenance vinyl shading. The property is a part of bankruptcy. राइट. बैंकरप्सी आपको पता है क्या होती है? वही कि अगर आप पैसे लोन लेते हैं और ले नहीं पे करते तो आप बैंकरप्ट अपने आप को बोल देते हैं. तो बैंक आता है, आपका कार ले जाता है, आपका घर ले जाता है, आपके कंप्यूटर ले जाएगा, जो जो आपके नाम पे चीज़ें होती हैं वो बैंक ले आता है, उससे अपने पैसे निकलवाता है. और फिर आप पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है कि आप कभी भी ज़िंदगी में लोन नहीं ले सकते. आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप बैंक का क्रेडिट कार्ड भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बैंक का डेबिट कार्ड भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं. बहुत बुरी हालत हो जाती है. But anyways, seller will make no repairs to comply with the financing requirements. Right? See? Now the issue is कि बैंक इस पे लोन नहीं देगा. Right? ये बात तो कंफर्म है. वो इस वजह से घर की हालत ख़राब है. बैंक ख़राब घरों पे लोन नहीं देता. तो इसको आपको फिक्स करना लाजमी है, और फिक्स करने के लिए आपको कैश ऑफर ही लाजमी है. उसके अलावा there is no other options. 60,000 roof, kitchen, wiring. Oh my god, wiring is very expensive. Yeah, I think the wiring is even less than 30. Wiring is probably. Allah. Allah. I shouldn't be canceling the azan, but because we don't hear adhan here, right? So all the phones have adhan and they start ringing at the same time. Yeah, so $15,000 to $30,000. It says Canadian, but it shouldn't be. How much it would be? 12 से 30,000. 12 से 30,000. Oh my god, that's a lot of work. Yeah, I think 30,000 is where we're gonna start, man. Or it's where we're gonna end. Let's go in the middle. So let's say 17,000 for, cause roof आपकी होगी 12. Kitchen is completely needs to be done, so probably 17. What else do we have? Oh, sidings. Siding is gonna be another 15. $61,000 की almost budget होगा.
Yeah, man, this is pretty cooked. It's gonna cost us quite a bit, like almost the same price. इस घर को बनाने के लिए सेम प्राइस मैंने सिर्फ मोटा मोटा लगाया है, अंदाज़ा ज़्यादा नहीं लगाया. I think 30 would be the best offer we can do. I think even if we can get it at 25, that would be a better deal. 25 would be a better deal, but it's gonna get impossible for you to do. So basically, अगर आपको हुसैन 30 पे मिलता है ना, तो हम 30 पे जाकर इसको कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में जाके फिर इन्वेस्टर भेजते हैं और उसको वो दिखवाते हैं घर को कि भाई घर देख ले, जो काम निकला है मुझे बता देना, मैं फिर वो उस पर अगर ज़्यादा काम निकलता है तो फिर हम उसको और निगोशिएट करके 20-25 पे ले आते हैं. But now we can do it what we can. But I will call. I don't think the call would make sense because numbers are so off right now. Numbers are so off. But I will call just to make sure that my numbers are good. Hello. Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. 143rd Street buyer. Hello, you've reached the office for Shane Reed. Please leave me your name, number, and message, and I will return your phone call as soon as I am able. You can also text this line. Please also email me as well. Either way, I will return the message. Thank you. Hey Shane, this is Syed. Me and Anna has been working on this property, located at 143rd Street, Cleveland. I wanted to know what sort of um, extent of work it requires, and we can potentially put an offer in place. We have sent a initial offer at let me check my notes, at 42, but I think it wasn't accepted or something was missing. But I want to see what kind of extent of the renovation it would require. I'll have my contractor walk the property and we will be able to give a proper number on this, where we need to be at. I'll shoot you a quick text as well. We'll chat there. Bye for now. हमने इसको 42 दिए and he accepts it. अगर he accepts it then it's the issue, right? 42 पे अगर हम उसको दे रहे हैं 42 and then plus 61 plus 42, that's $103, 103 property value. I think that's a lot. That's a lot. Listed for sale for $53,000. इसने खुद ने खरीदी थी, नहीं खरीदी नहीं थी, इसने लिस्ट करी है. Oh, so he's the owner. Okay. इसने 2018 में बेचने की कोशिश करी थी $53,000 की, मगर नहीं बिकी. ठीक है. Now we give him 40 something, right? 42. I mean 42 versus 30,000, there's a $12,000 difference. Okay, so it's not a bad offer that you have given it, but मगर आप उसको हमने उसको दे दिए, that's an issue, right? हमने दी इसको letter of intent दिया, तो हमें contractor भेजना पड़ेगा contract में जाने से पहले, I think, and then वो number बताएगा and then we will tell him. But again, we have to
Okay, let's see. वो जैसी response करता है, then I'll call him again and I'll kind of try to see if this number is good still. Oh shit, there was 1:30. I had to be somewhere. Shit. Hey Shane, hope you're doing well. Just left you a quick voice note on 143rd Street property. Looking forward to your response. Best, Sayed. Give me 1 second, guys. I gotta make this call real quick just to see what's going on. But mostly questions are done, right? It's only, I think. Hello? Hi, I'm so sorry. I forgot that 1:30 he has an appointment. Did you go? They're coming in the room right now? Why they're not asking him to go to get a scan on the bottom? Are you okay? Are you okay? Can you handle that? Or do you want me to come? Are you sure? Okay. I'll try to come. I'm just finishing up right now. It's okay. I'm over time anyway, so I will come soon, okay? Just handle it for now and I'll meet you there. Bye. Okay. I guess the last question we have said I'm waiting for Michael deal that the properties are rented. We can't do 0.7 because we can have loan getting probably because 25K. That's why we're offering 60%. Heather, come off mute. I want to talk. I don't understand exactly what you're saying. Because I think I answered the same questions before, but you're asking me again. So that means I didn't explain it properly. I'm asking for Michael deal that the properties are rented. We can't do it because we have a loan getting property. 0.7 हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी काम नहीं है, नंबर 1, और कैश जो उसकी ऑफर है 150 से अंदर है, ठीक है. तो उस पर लोन भी मिल जाएगा क्योंकि उस पर कोई काम नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर. हाँ, तो DSCR या बैंक कोई भी उसको लोन दे देगा इन्वेस्टर को. Can do it because we have loan. Heather, are you here? Yeah. Hussein, which deal, bro? I don't know. Heather, if you cannot talk, just send me a private voice note, okay? I don't understand exactly, so please send me the voice note so I can understand better. Hussein,
Screenshot cash offer, I can send it. Which cash offer, man? I don't remember now. ब्रो यो जो आपने मुझे भी भेजा है, जो मैंने आपको अभी भेजा है, वो जो आपने मुझे भेजा है कि आपने जो उसको कहा था एजेंट को कि मैं आपको बेसिल करता हूँ ईमेल के थ्रू। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी जो खुली हुई है सामने इस पे। नहीं नहीं, मेरे छत पर देखिए ऊपर आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। वो अच्छा, वो वाला। तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो कि क्या ऑफर देनी है जस्ट उसको? ये जस्ट ये स्पेंड करना है या उसके नहीं साथ नहीं नहीं कुछ नहीं और नहीं कर नहीं, दें? ये नहीं सेंड करना आपने। ये तो हमारी अपनी कैलकुलेशन है ना, तो आपने इसको ये कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करना। बस आप इसको देखिए, 5 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। परचेज प्राइस आपने देनी है कि आप 50,000 की बाय कर रहे हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट आप 45 की दे रहे हैं, मंथली पेमेंट आप इसको 189 की दे रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज़ आती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम 0 दे रहे हैं, तो उसको आप छोड़ दो, उसको नहीं मेंशन करना। और पांचवी चीज़ आती है बलून, जो कि हमने 6 ईयर का 6 साल का लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको टाइप करके देना है, ओके ओके। उसको बोलना है परचेज प्राइस डॉट परचेज प्राइस, फिर डाउन पेमेंट डॉट डाउन पेमेंट, और फिर चाहिए तो आप उसको यहाँ से, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है ताकि आप यहाँ से चीज़ें निकाल लो, ओके ओके। ठीक है। नो वरीज। Yeah, Heather, are you here? I think there was an issue with the mic. But send me a voice note with your question. But Heather, I'm still telling you, regardless of this deal happen or not, I would recommend not spend too much money on it or too much time, because कहीं पे कोई डील है जिस पे आप नहीं पहुंच पाए और वो हाँ लेके बैठा हुआ है, उसको प्रॉपर्टी फौरन से सेल करनी है, और आप बिकॉज माइकल की वजह से आप फंस गए यहाँ पे, राइट। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम बिल्कुल उस पर फोकस करो कि जो थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिव है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज टाइम इज मनी, ओके। Alright guys, I will let you guys सही go. है। Sorry, go ahead. चलो कि अगर हमने इसको पहले 0.7 ऑफर किया था तो अब हम इसको 0.6 ऑफर कर रहे हैं, सही है। तो ये इस वजह से है क्योंकि हम इसको क्योंकि हमें लोन ना मिलने का डर है। हम 0.7 से 0.6 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें लोन ना मिलने का डर है, करेक्ट? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, 0.7 और 6 से लोन का ताल्लुक नहीं है, राइट। लोन का ताल्लुक इससे होता है कि प्रॉपर्टी में काम कितना है। अगर प्रॉपर्टी में काम बहुत ज़्यादा है तो लोन तो हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, और कैश ऑफर भी नहीं, कैश ऑफर तो 0.5 पे पहुंच जाएगी, यू अंडरस्टैंड। तो लोन हमें मिलेगा, हमेशा उस पर मिलता है जिस पे प्रॉपर्टी ठीक ठाक हो, तो सेल्फ फाइनेंस उस पर चलती है, लोन आपको ठीक ठाक प्रॉपर्टी मिल जाता है। बट कभी ऐसा भी होता है कि आपको प्राइवेट मनी मिल जाए, बैंक ने अप्रूव नहीं किया, DSCR वालों ने अप्रूव नहीं किया, बट आपको प्राइवेट मनी मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, बट वो आपको वो लोन दे सकते हैं। देखिए, वो लोन देंगे कि आप इसको रेंट पे डालो और पैसे कमाओ, मगर उसका कैश ऑन कैश रिटर्न बहुत कम होता है, ठीक है। और 0.7 से 0.6 इस वजह से भी किया है ताकि, क्योंकि इसमें काम है, तो हम सेलर जो खरीदने वाला बंदा होगा उसको बताएंगे कि आपको हम और ज़्यादा इक्विटी दे रहे हैं, आप पहले दिन से आपके पैसे ऑलरेडी उसमें होंगे प्रॉपर्टी में, क्योंकि आप इक्विटी ओन करते होंगे डे 1 से, ठीक है। तो इक्विटी ओन का उसको एक फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा रेंट का होगा क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज रेंट है। नुकसान जो है ना वो रीहैब कॉस्ट का, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं आप उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते, आपको फिक्स करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिस पे हम फोकस करें कि हम 3 प्रॉपर्टी ले लें, 4 प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि अगर वो सेल नहीं भी होती सो वी कैन पुल द ट्रिगर, राइट। हम ट्रिगर पुल कर सकते हैं। मगर अगर 1.1 मिलियन लेनी है, 1.1 मिलियन वाला पोर्टफोलियो, तो वैसे भी वो सेल नहीं होगा हमसे किसी से भी, क्योंकि इतना कैश तो कोई भी नहीं लेगा, वो भी सिंगल प्रॉपर्टीज पे। 1.1 मिलियन के पैसे वो एक बड़ी बिल्डिंग पे लगाएगा और वो खरीदेगा, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसको जॉब करने वाले भी कम ढूंढने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ एक ही है, वो एक ही विजिट में सारे घरों को चेक कर लेगा, राइट। तो 1.1 मिलियन का पोर्टफोलियो जब सेल होता है तो यूजुअली उसमें उसको बहुत अच्छी डील बनानी पड़ती है, क्योंकि वो एक मल्टी यूनिट घर है।
अब उसको 10% हर घर पे करना है, और हर घर पे एक नया बंदा जाएगा, चेक करेगा, वापस आएगा या रेंट पे डालेंगे। मगर दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे आप अगर मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी है, पूरी बिल्डिंग रेंट पे रहती है और 24 घंटे रहती है, अगर सारे रेंटर भर गए तो वो वेटिंग लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और अगर नहीं भरे तो वो डालते रहेंगे धैर्य अगर कोई बंदा आ रहा है। तो 1.1 मिलियन का कैश लेके आना, वो भी उस प्रॉपर्टी पे जिस पे इतना सारा काम है, इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है। और 0.7 से 0.6 पे हम इस वजह से गए थे, दो रीजन पे, कि एक तो हमें इक्विटी मिल जाए और कैश फ्लो हमारा बढ़ जाए। ठीक है। अगर सस्ती प्रॉपर्टी है तो इसका लोन भी सस्ता होगा, कम होगा, तो आपका कैश फ्लो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। प्लस आपकी इक्विटी भी ऑलरेडी आ गई, तो ये 2 पॉइंट्स की वजह से हम 0.7 से 6 आए। उन तीन घर को छोड़ के, राइट, जो 3 घर जो ठीक हैं उसको तो 0.7 पे ले सकते हैं, मगर उसके अलावा के घरों की बात कर रहे हैं। ओके, होपफुली दैट मेक्स सेंस। तो उसको मैं ये कन्वे करूँ कि वी कैन नॉट बाय योर फुल पोर्टफोलियो फॉर 1.2 or 3 million dollars, but we can continue to move forward with these three properties, and we will see further if we want to buy, but we are interested in the whole portfolio after that. यस, मैंने उससे बात करी थी, मैंने उसको यही बोला था कि भाई, मैंने आपको बताया था ना, एक ईमेल पे बोला था कि हमने कोई और प्रॉपर्टी बाय कर ली तो हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर चला गया, तो फिलहाल के लिए हम 3 बाय कर सकते हैं, और 3 को फिक्स करके हम और आपसे ले लेंगे। जब तक 3 से 4 महीने लगते हैं प्रॉपर्टी को फिक्स करने में, दोबारा मार्केट में लाने के लिए, तो उन 4 महीने पे आई विल हैव अनदर इन्वेस्टर ज्वाइन मी। तो उसने बोला था कि नहीं, मुझे 3 नहीं बेचना, मुझे पूरा ही बेचना है। तो उसने लिखा था नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उसको बोला था, हालांकि उसने मेंशन किया हुआ है अपने इसमें कि या तो एक बाय कर लो या 11 की 11 बाय कर लो। मैं बताऊं उसने क्यों दिमाग चेंज किया? वो इस वजह से, क्योंकि हमने उसको पूरी प्रॉपर्टी की बात कर दी, तो उसको कोई मिल गया कि जो पूरी 11 की 11 बात कर रहा है। ठीक है। और उससे अच्छी खासी बातें आगे भी बढ़ गई थी, और बाकी के लोग उसको 50% ऑफर दे रहे हैं, तो उसकी हट गई थी, राइट, कि वो तो ऐसे नंबर दे रहे थे मैं सेलर के पास लेके भी नहीं जा सकता। मगर जब हमने प्रॉपर्टी की बात कर दी तो वो फैल गया था कि नहीं, अब सारी लो, क्योंकि हमारी उससे अच्छी बातचीत हो गई थी, काफ़ी आगे तक चले गए थे। क्लोजिंग कॉस्ट, हाँ, और मेरा कमीशन भी। एग्जैक्टली, उसका कमीशन भी हम भी दें और क्लोजिंग कॉस्ट भी हम दें। तो उस वजह से वो फंस गया। वो टेक्निकली ये बात ये मिस्टर सेलर को नहीं बता सकता कि पूरी डील हो गई है, सिर्फ कमीशन पे बात फंस गई है। ज़ाहिर है मिस्टर मेरा पोर्टफोलियो निकल रहा है और तुम्हें अपनी कमीशन की पड़ी हुई है, तो ये किस मुंह से बताएगा? सो दैट्स वेयर द इशू इज। और $45,000 का कमीशन डजंट मेक सेंस ईदर। दैट्स अ बिग अमाउंट फॉर अ स्मॉल। सेलर को नहीं बताया इस डील के बारे में? उसने ये नहीं बताया होगा, कि उसने वैसे बता दिया होगा, मगर उसने हमारी कॉस्ट में बढ़ा के बताई होगी हमारी 45,000, राइट। जैसे हमने अगर 1 लाख की ऑफर, एक 1 मिलियन की ऑफर दी, तो उसने 1,045,000 बताई होगी एजेंट को, या उसने बताया होगी कि ये लोग मेरा कमीशन नहीं पे कर रहे होंगे या जो भी है। मगर उसने ये नहीं बताया होगा कि सिर्फ डील यहाँ फंस गई है कि मेरे कमीशन की बात फंस गई है, क्योंकि क्लोजिंग कॉस्ट हम वैसे भी पे कर ही रहे। अब तो हम उससे भी लोग आ गए, तो उसने तो मानना ही नहीं। हाँ, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि 50, क्योंकि क्लोजिंग कॉस्ट कम नहीं होगी हर घर की। अगर आप 2 से 2,500 भी लगा लें तो 25 से 30 बन जाएगी क्लोजिंग कॉस्ट, आसान से, आराम से। तो वो, और फिर उसको एजेंट कमीशन 45,000 का है, तो वो भी उसको चाहिए। ओके। वो आपको कॉल भी कर रहा था इस बारे में कि नहीं, इसकी आज या कल? नहीं, आज नहीं, कल हुई थी मेरी बात, हुई थी इससे में थर्सडे को हुई थी, या वेडनेसडे को हुई थी आखिरी बात। उसके बाद मैंने उसको ईमेल करी थी इसी बात का कि we were continue to move forward with 3 property if you're interested, and he said the seller is not interested right now. तो आप इसको फॉलो अप पे रखो, करते रहो, बट अगेन हैदर, आई गारंटी यू, कहीं पे एक डील है जो आप मिस कर रहे हो उसको, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो। सो कीप डूइंग 10 ऑफर्स, 11 ऑफर्स पर डे, ताकि आप वो डील तक पहुँचो। फिर माइकल को आप हल्के फुल्के करते रहो, क्योंकि माइकल कहीं नहीं जाएगा।
माइकल की प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही, ये आज भी लगी रहेगी, 10 साल के बाद भी लगी रहेगी, अगर उसने कुछ चेंज नहीं किया, राइट। 10 साल तो नहीं, मतलब 3-4 साल में उसकी इक्विटी बढ़ जाएगी, तो फिर हम वो 50% वो 40% वाला कर सकते हैं काम, राइट, सेकंड पोजीशन वाला, और उसको ले सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम उससे कहें कि अगर तुम इसको सारा फिक्स कर सकते हो तो हाँ, फिर हम 100%, 70% पे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप उसको बोलो कि इफ़ यू कैन फिक्स ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट, 25,000 हमसे हम कम कर रहे हैं ना, आप हम नहीं करते कम काम, आप 25,000 लो और उसमें सारा काम करा दो, और करा के हमें ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी दे दो, हम आपको जो पहले ऑफर करी थी हम उस पर ले लेंगे, नो इशू विद दैट, राइट, क्योंकि उस पर हमको लोन भी मिल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये सेफ्टी है। दूसरी बात ये कि हमें रेंटर भी मिल जाएगा उसमें, राइट, अगर रेंटर का 27 में ख़त्म भी होता है तो हमें पता है कि दूसरा बंदा मिल जाएगा कि घर की ठीक कंडीशन में, राइट, और फिर इस पर लोन भी मिल रेंटर तो जाएगा। पहले 70% है। हाँ नहीं, 70% पे तो है, बट उसको फिक्स करना पड़ेगा ना, अगर 2027 पे लीव करता है रेंटर, तो 27 में अभी 6 महीने रह गए, राइट, तो 6 महीने के बाद हमें मतलब ऑलमोस्ट $4 लाख ला के सारी प्रॉपर्टी में डालने पड़ेंगे, राइट। तो इन्वेस्टर्स को नहीं चाहेगा कि भाई 6 महीने में, वो चाहेगा 5 साल 6 साल में मुझे मिले, मैं उसमें अपने पैसे बनाऊं एंड देन वी कैन सी, राइट। तो अगर वो सब कुछ ठीक बना ले, तो अब वो 27 में छोड़ के जाते हैं, 28 में छोड़ के आते हैं, डजेंट मैटर, जैसे ही वो निकलेंगे नया रेंटर आ जाएगा, क्योंकि घर बिल्कुल नई कंडीशन में, ठीक है। और लोन का तो वैसे ही मसला नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन भी चल जाएगा, फर्स्ट पोजीशन भी चल जाएगा, और रेंटेड ऑलरेडी है प्रॉपर्टीज, नो प्रॉब्लम। मगर वो करेगा अच्छा, नहीं, मैं सही है। आपको बताऊं, एक एक लास्ट थिंग मेरा एक वो, लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ अगर हम YouTube पे देखते हैं तो वो ये बताते हैं कि जो मिनिमम हमें कमीशन मिलना है, मतलब वो जो जिस तरह से सेल करते हैं वो 10K है, सही है। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि हमें 500 मिलना है या हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, 1000 मिलना है। 500 से 1000 जो होते हैं ना, वो रेफरल फी होती है। 10K वाली जो चीज़ होती है ना, 10K आपकी जेब में नहीं आते, 10K आपके और सेलर, जो आप डील लेके आए हो और जो खरीदता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। उसमें आपको ये नहीं बोलता कि भाई असाइनमेंट 5,000 है, नहीं, असाइनमेंट होता 10,000 है, आपको मिलेंगे 5,000, ठीक है, नंबर वन थिंग। तो ये टेक्निकली बायर और सेलर जो इन्वेस्टर लेके आता है उसके दरमियान स्प्लिट होती है, आप दोनों फाइंड कर लो, देन इज 10K, ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, 10K वाला ज़माना था, आई थिंक आज से 3 साल पहले की बात है, ठीक है। आप कोई भी प्रॉपर्टी, अनलेस कि वो मल्टी यूनिट है, ठीक है, मल्टी यूनिट है, मैं सिंगल फैमिली की बात नहीं कर रहा, मल्टी यूनिट है, तो आपको 10K क्या, आपको 50,000 भी मिल जाएंगे, पर आपको 10 वीडियो बनाएंगे, तो इट डजेंट मैटर। मल्टी, मैंने आपको बताया ना कैलकुलेटर पे, जो मैंने आपको दूसरा कैलकुलेटर बताया था, उस पर लिखा हुआ था कि 5% इज द असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब 5% $1 मिलियन की प्रॉपर्टी में 50,000 होता है, ठीक है। तो 50,000 विल बी स्प्लिट बिटवीन हु, बिटवीन योर एक्विजिशन मैनेजर जो अक्वायर करता है प्रॉपर्टी, डिस्पोजिशन मैनेजर जो डिस्पोज करता है प्रॉपर्टी, द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग, द कॉस्ट ऑफ द पेपर वर्क, एंड द कॉस्ट ऑफ द लीगल इश्यूज, जैसे इंस्पेक्टर जो भी वॉक वगैरह करता है, राइट। तो उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर जो पैसे बचते हैं तो वो मिलते हैं, राइट। टेक्निकली इट्स अ परसेंटेज, मगर अगर मल्टी यूनिट है देन इट डजंट मैटर, क्योंकि 50,000 आपको और मुझको ज़्यादा लगते हैं, मगर इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वो मिलियंस डॉलर का प्रॉफिट बना रहा है, उसके लिए 50,000 जैसे हमारे पास जेब में सिक्के होते हैं, वो हैं, राइट, उसके लिए, क्योंकि वो खेल ही बड़े नंबर में रहा है, वो 50-50 मिलियन की प्रॉपर्टीज में खेल रहा है, 80-80 मिलियन की डॉलर की प्रॉपर्टी, उसके लिए 50,000 जैसे चेंज पड़ा होता है बैंक में, वो है। हमें लगता है 50,000 ज़्यादा है, क्योंकि हम छोटे नंबरों में खेल रहे हैं फिलहाल के लिए, ओके। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट सिंगल फैमिली पे इट्स इम्पॉसिबल, अनलेस कि आप कोई बहुत ही बड़ी डील, अनलेस कि आप फ्लिप कर रहे हो प्रॉपर्टी। अगर आप खुद फ्लिप कर दो तो आपकी असाइनमेंट ऑफ कोर्स 25,000, जो भी लोग फिक्स करते हैं प्रॉपर्टीज को वापस सेल करते हैं, 25 से 30,000 से कम की बात नहीं करते, और वो हमसे कैश पे लेंगे भी नहीं ऑफर अनटिल कि वो 20 से 25,000 बना लें, राइट। अगेन बट उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि अगर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आ गई, या 3 महीने की कॉस्ट लगाई थी, 3 से 4 महीने हो गए, आपका लोन भी बढ़ जाएगा, आपको लोन भी पे करना है, अब आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है, आपका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, कॉन्ट्रैक्टर चूना लगा रहा है पीछे से, 200 की चीज़ को 300 की बेच रहा है, आप बैठे हुए हो कोई और स्टेट में, इट्स वेरी हार्ड।
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है, पूरी टीम बनानी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर आपका होना चाहिए, आपका फैमिली का मेंबर, नहीं तो इतना आप उस पर ट्रस्ट करो कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, राइट? क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ पे तो हो नहीं और ना ज़रूरत है आपके होने की। तो वो काम करे, उसके बाद आपको एजेंट ढूंढना है, एजेंट भी अच्छा होना चाहिए जो आपको प्रॉपर सेल करके दे प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेल होती तो पहलेगा। तो 25 से 30 हज़ार उनका होता है कि मेरी जितनी मेहनत होगी ये 3 महीने की, उसमें 25 से 30 मेरे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो उनका फिर असाइनमेंट ज़्यादा होता है। और सेल्फ फाइनेंस है तो एक वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे जो जेरी है ना, जेरी हाँ वो भी कहता है कि उसका उसका क्राइटेरिया वो भी यही है कि आपने 70% पे जो वो प्रॉपर्टी लेके आनी है जो जिसमें काम ना हो। तो हाँ वो मैं आपसे खरीदूंगा और आपको बिल्कुल 10 के असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि अगर आप एनरोल होंगे मेरे साथ। हाँ। सो जेरी जो है वो खुद नहीं खरीद रहा, राइट? वो बोलने में तो ज़ाहिर खुद है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, वो आगे बेचेगा ना, वो खुद अपनी नहीं खरीद रहा, उसके पास इन्वेस्टर्स होंगे जिस तरह सबके पास होता है, और उनको वो आगे बेचाता है, तो उसमें से असाइनमेंट मिलेगा जो आपको वो असाइनमेंट फ़ी देगा, राइट? जेरी इस लेवल पे, जब मैं था जेरी पे तो जेरी तब खरीदा था, अब इस लेवल पे वो सिंगल फैमिली नहीं खरीद रहा होगा, वो हमेशा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद रहा होगा, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट खरीद रहा होगा, जिसको वो टेक्निकली फोकस करता है नहीं, वो फिलिप। उसकी रेजिडेंशियल की भी बात करता है, वो यही हाँ कहता हाँ है नहीं आप लेके आओ मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से खरीद लूंगा। नहीं नहीं, वो तो है भाई, खरीद लूंगा वो अपने लिए नहीं खरीद रहा ना, वो आगे सेल करेगा, राइट? अपने लिए अगर खरीदेगा तो इसके लिए तो 10 साल से काम कर रहा है, ऐसे तो लाखों प्रॉपर्टीज हो जाएंगी उसके पास, राइट? तो वो मेक सेंस नहीं कर सकता। होता ये टेक्निकली यूएसए में इन्वेस्टर्स ये करते हैं, 5 घर की लिमिट होती है, आप 5 घर खरीदते हैं, उसको चलाते हैं, 5 घर को सेल करते हैं और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद लेते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो 11 प्रॉपर्टीज लेके आया ना, ये क्यों फंसा हुआ है? इस वजह से कि 11 प्रॉपर्टीज को सबके किसी का नल टूट गया, किसी की लाइट टूट गई, किसी की ब्रेक इन हो गया, कहीं पे शूटिंग हो गई, लाखों मसले होते हैं। एक बंदा 11 प्रॉपर्टीज को नहीं देख पाता, भले आपके पास मैनेजमेंट कंपनी हो। तो 5 घर लेते हैं, 5 को सेल करते हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग लेती हैं। तो ये जेरी जो है वो खुद नहीं खरीद रहा होगा, आगे सेल कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो वो और आप जो है असाइनमेंट शेयर करेंगे इन अ सेंस। अगर वो खुद खरीद रहा होगा वो होगा मल्टी यूनिट बिल्डर, वो तो आप ग्रैंड कार्डोन के पास भी चले जाओ तो वो भी आपकी ले लेगा मल्टी यूनिट, अगर आपकी अच्छी डील आ गई है। ओके तो फिर वो उसका करता कैसे होना है, क्योंकि अगर हम 70% पे लेके आ रहे हैं हाँ और वो हमें 10,000 असाइनमेंट दे रहा है, तो उसको तो मार्जिन ही थोड़ा सा बचता होना है, वो सेल कैसे करता है फिर उसको आगे? तो जब भी तो बोल रहा हूँ 10,000 बोलने के लिए ठीक है, बट इन रियलिटी डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ 500 से 1000 आपको मिलेंगे, ठीक है? 500 वाली जो गारंटी है ना, वो तो हम खुद करते हैं कि भाई 500 तो हमें पता है कि हम खराब भी प्रॉपर्टी हो ना, हम 500 उसमें से बनवा लेते हैं किसी तरीके से। मगर अगर नहीं बना पाए तो वी विल डू इट। मगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, राइट? प्रॉपर्टी को होना भी एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी में काम भी नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, प्रॉपर्टी का एजेंट ओपन होना चाहिए क्रिएटिव फाइनेंस के लिए। तो बोलने के लिए तो टेक्निकली बात यह है कि 500 से 1000 आप कमा लेंगे, राइट? बट इन रियलिटी देयर इज मोर थिंग्स, राइट? जो आप क्लास में लेके सीखते हैं, समझते हैं कि भाई अच्छा इसका ये मसला, तो अब हम ये करेंगे, ये मसला तो ये करेंगे। तो इसी तरह तो आपको सोचो एक इन्वेस्टर है, आप उसको वो बोल रहा है कि मुझे 70% ऑफ लेके आओ, मैं ख़रीद लूँगा। और ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई काम नहीं है, प्रॉपर्टी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में, आप 70 में लेके आते हैं, आपको 10,000, वो 10,000 तो नहीं होगा बट 10% जो भी होगा उसका कमीशन, वो आपको आपको जैसे हो सकता है 12,000 हो, 13,000 हो, आई थिंक 10% 10% कमीशन बोला उसने। क्योंकि वो कहता तो है कि मैं 10% 10,000 में ज़्यादा खरीदूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 10% ऐसी सारा कुछ है, तो उसके है। करीब करीब ही है। 10% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप 10%, तो एजेंट भी नहीं कमाते इतना। एजेंट कमाते हैं 2.5%, एक साइड का एजेंट, दूसरे साइड का एजेंट 2.5%, तो 5% एजेंट कमाते हैं, यूजली 5 to 6%, वो भी बहुत अच्छे पूरा रख रहे हैं तो। बट अगेन लेट्स से अगर 10,000 है तो 10,000 वो आपको देगा। अब फॉर एग्जांपल $1 लाख की प्रॉपर्टी है, एक लाख छोड़ो, अभी डिस्कोड, अभी हमने ज़ेलो पे इतनी प्रॉपर्टी देखी है डिट्रॉइट पे जो बहुत कम पे लगी हुई है। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट इमेजिन कि भाई प्रॉपर्टी 70,000 की है, राइट? छोटी प्रॉपर्टी 70,000 की, उस पे आपको 10,000 दे दे तो उसके पास तो बचेगा ही नहीं, वो तो आपको मेरे ख्याल में 10% से भी ज़्यादा कॉस्ट बन जाएगी, राइट? 100 का 10% 10,000 होगा,
70 का 10% 10,000 नहीं होगा, राइट? वो होगा कोई 7,000 और 7,000 पे कम। तो अगर वो 10,000 आपको 70,000 की प्रॉपर्टी पे दे दे, तो उसको तो उसने तो मार्केट से ले ले, वो उसको ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। मेक सेंस करता है? वो मार्केट पे जाके खुद 20% का डिस्काउंट ले ले, आपको बीच में से कटा दे, तो उसको सस्ती मिल जाएगी। देन देयर इज नो डिस्कशन, राइट? अगर आप उसको कोई लेके आता है, कोई भी ये लेट्स से डिट्रॉइट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं 70,000 की है, 75,000 की, ठीक है? अब इस घर में कोई काम नहीं दिख रहा, इट्स न्यूली डन, वो आपको कैसे दे सकता है इस घर पे 10,000? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगेन बोलने के लिए तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको 500 से 1,000 दूंगा। 500 तो मुझे पता है, अब ये आप 70 की हो या 20,000 की भी हो, तो 500 तो मैं से निकलवा सकता हूँ, राइट? 500 का तो प्रॉफिट मैं किसी भी इन्वेस्टर से निकलवा सकता हूँ या कॉन्ट्रैक्टर से निकलवा सकता हूँ, तो 500 तो मैं आपको दे सकता हूँ, ये तो मुझे कंफर्म है। इस वजह से हम गारंटी भी लेते हैं कि 500 तो हम आपको दे देंगे, उसका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? 500 से 1,000 फिर डिपेंड करता है रेफरल फी में कि डील कितनी अच्छी है। अगर ये 70,000 की डील है और आप लेके आ गए 35 में, देन इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? अगर सॉरी फॉर एग्जांपल हम्माद इज एबल टू ब्रिंग दैट हाउस फ्रॉम 100,000 to 34,000, then he can easily get $1,000 or more, right? क्योंकि बहुत अच्छी डील बन गई है तब। बट अगर हम हमें इन्वेस्टर मिल जाता है 50,000 पे और 50,000 पे सेल करते हैं, तो हमें वो 50,000 पे ही सेल होगा, 50,000 से ऊपर नहीं सेल हो पाएगा, क्योंकि उसकी उसमें कॉस्ट नहीं है, उसमें अंदर से घर खोखला है बेसिकली। ओके, तो हम ऐसे घर कैसे फाइंड करेंगे जिसमें हमें जाहिर सी बात है, हम एक चीज पे काम कर रहे हैं, तो हर बंदा तो यही चाहेगा ना कि उसको जरा असाइनमेंट फी वाला हाउस मिले। हाँ, तो ऐसे हाउस कैसे मिलेंगे फिर? असाइनमेंट फ़ी वाले जो बेसिकली असाइनमेंट फ़ी रेफरल फ़ी एक ही चीज़ है। होता ये कि आप अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? बात आती है लाइबिलिटी पे। आप जितनी अपनी लाइबिलिटी लेंगे, राइट, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, आपकी असाइनमेंट फ़ी उतनी बढ़ती जाती है, ठीक है? आपका रिस्क क्या होता है सबसे बड़ा, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे नाम लिख दिया, तो ये आपने रिस्क खेल लिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं होता तो यू आर लायबल फॉर इट, ठीक है? तो ये रिस्क हो गया। तो अगर आप ये रिस्क ले लें, कॉन्ट्रैक्ट पे अपना नाम लिख लें, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स कर लें, तो असाइनमेंट फ़ी इज़ नाउ 50-50, ठीक है? जिसको भी आप जो भी सेल कर, जैसे मैं इन्वेस्टर लेके आता हूँ फॉर एग्जांपल, और आप डील लेके आते हैं, आपका नाम डील पे, तो मैं इन्वेस्टर लेके आता हूँ, आप डील लेके आते हो, हम दोनों मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट असाइन करेंगे, मैं उस असाइनमेंट को लेके इन्वेस्टर को, तो 2 असाइनमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो 2 असाइनमेंट होंगे, तो उसकी फिर जो भी असाइनमेंट की कॉस्ट होगी वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपने रिस्क लिया है, आपने निकल के आए, तो उस तरह आप और रिस्क ले लो, आप अपना नाम लिखो और इन्वेस्टर भी आप अपने पास लेके आ जाओ और उसी को आप ऐड कर दो, देन यू विल कीप द होल फीस, ठीक है? बात आती है रिस्क पे, जो जितना रिस्क लेना चाहे उसका उतना ज़्यादा। अब जैसे फिक्स एंड फ्लिप प्रॉपर्टीज़ वाले वो होते हैं इन्वेस्टर्स, वो $30,000 से कम में बात ही नहीं करते। अगर आप उनको प्रॉपर्टी कम में लेके आओ और उनका प्रॉफिट 30,000 नहीं बन रहा, 30,000 प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा जो पैसे कॉन्ट्रैक्टर को, लोन के एजेंट के नहीं, 30,000 प्रॉफिट, वो बात नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक तो वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे पूरे पैसों से, दूसरे उनको रिहैब भी लगानी है, और वो 3 महीने गुजारने भी हैं, ठीक है? 3 महीने में मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ नहीं पता होता, ठीक है? तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है, तो रिस्क मैनेज करते करते उनको 30,000 से कम की वो बात नहीं करते नंबर पे। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कभी वो 25 से उनको मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, राइट? कभी 25 मिल जाएंगे, कभी 20 मिल जाएगा, कभी 30 भी मिल जाते हैं, कभी 35 भी मिल जाते हैं अगर मार्केट बेहतर हो गई तो। अब 30,000 से वो डील को डिस्कस ही नहीं करेंगे अगर आप उनको $30,000 का मार्जिन नहीं ला के दो, राइट, सारे काम करने के बाद। तो अगेन क्यों? वो इस वजह से क्योंकि उनका रिस्क ज़्यादा है ना, तो वो देंगे भी आपको, फिर आपको मतलब निचोड़ेंगे बेसिकली इन अ सेंस। तो इसी तरह आप रिस्क लो ज़्यादा और यू कैन डू इट। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ऐसा नहीं है, राइट? हमारा जो टोटल डिस्कशन है वो रेफरल फ़ी पे डिस्कशन है। जहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं होती पेपर वर्क की, किसी भी चीज़ की, पैसे की, टोकन मनी की, वी स्टॉप दैट, ठीक है? फिर हम टेक ओवर करते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी रेफरल फ़ी उतनी है 500,000, जो कि नॉर्मल है, ठीक है? अगर आप
रिस्क लेते हो, जैसे यू ग्रेजुएट, ठीक है, आप ग्रेजुएट करते हो और आप बोलते हो कि नहीं आई एम गुड टू गो, मेरे पास पैसे थोड़े बहुत सेफ है, मैं कुछ भी हो जाए मैं कम से कम डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, आई कैन टेक द रिस्क बेसिकली। तो फिर यू गो अप, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट खुद करते हैं, साइन खुद करते हैं और पैसे उसको खुद दिखाते हैं, राइट, यू टुक अ रिस्क टू डू ऑल दैट, और फिर आप शामिल हो जाते हैं और फिर वो आप आपका। मगर अगर आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी और को, ज़ाहिर है आपको फिर वो स्प्लिट उससे करना पड़ेगा, फिर जो भी आपका एग्रीमेंट आएगा फिर उसको स्प्लिट करेंगे आप सेलर से जो आपको इन्वेस्टर लेके आएगा, राइट। तो बस बेसिकली आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते जाते हैं आपका असाइनमेंट उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, या आप खुद इन्वेस्टर बन जाओ तो आपको असाइनमेंट, तो असाइनमेंट फिर आपको हज़ारों डॉलर का फ़ायदा, राइट, 30,000 मैं फ्लिप की बात कर रहा हूँ, सेलर फाइनेंस का और ज़्यादा बेनिफिट होता है, या अगर आप मल्टी यूनिट पे सेलर फाइनेंस ले लो तो इवन बेटर, इवन बेटर, ठीक। तो अभी जो है हम इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इट्स ए रेफरल फ़ी, ठीक है, इट्स नॉट एन असाइनमेंट फ़ी। जैसे ही हमारे पास से कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमाद की डील क्लोज हो जाती है, हमाद 2-3 डील क्लोज करता है, देन वी विल मेक हमाद लेट्स से फॉर एग्जांपल अ कम्युनिटी लीडर, ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स विल बी द लीडर्स के उनके पास ये ऑप्शन होगा कि दे कैन डू देयर ओन असाइनमेंट्स, ठीक है। इट डिपेंड्स, अगर वो ज़ाहिर अगर डील सेल होती है इसका मतलब उनकी अच्छी डील है, दे नो एवरीथिंग, तो वी कैन रिस्क, हम उनके साथ मिलकर रिस्क ले सकते हैं कि लेट्स डू अ रिस्क ऑफ मेकिंग यू सो एंड सो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो कम्युनिटी लीडर बनते हैं तो फिर दूसरे स्टूडेंट उनको लेके आएंगे एज अ रेफरल फी। हम फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर मैं हमाद की बात करूँ तो हमाद के दूसरे स्टूडेंट हमाद को रेफरल फी लेके आएंगे, हमाद उसको प्रोसेस करेगा एंड देन हमाद विल सेल इट विद समवन, एंड देन हमाद को जो असाइनमेंट होगा वो स्प्लिट होगा, ठीक है, हमाद का असाइनमेंट और इससे स्प्लिट होगा 50-50, मगर हमाद 500 से $1,000 उस स्टूडेंट को देगा जो स्टूडेंट उसको लेके आया होगा, मेक सेंस। तो सेकंड स्टेप हमाद का, फिर अगर हमाद बढ़ता है या खुद इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमाद अपने अपने पैसे उसमें लगाए, देन he just have to give 500 and he'll keep all the assignment plus all the benefit that he's going to get. Does that make sense? Like, is it clear? Okay. Okay, so it's a step by step game. अगर जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी फिक्स नहीं करी, आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, आप बोलते हो ये इतनी अच्छी डील है कि मैं इसको खुद ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मगर आपने फिलिप जिंदगी में कभी नहीं किया प्रॉपर्टी, देन इट्स अ वेरी 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 बैड मूव, ठीक है। आपको तब भी वो फ्लिप को आगे भेजना पड़ेगा क्योंकि आपने कभी नहीं किया, और अगर आपको करना है, आप समझते हो मैं रेडी हूँ, देन यू हैव टू फाइंड समवन, किसी से पार्टनर करना पड़ेगा जो कि वाकई में फ्लिप करता है, आपने उसकी पोर्टफोलियो चेक करना है, आपने मेक श्योर करना है कि इसने वाकई में करा हुआ है, ठीक है, नंबर 1 वाकई में करा हुआ है, तो फिर आप उसके साथ पार्टनर करेंगे, आप बोलेंगे भाई आपका इस पे लाइबिलिटी ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको डील प्रोवाइड करूँगा, फाइनेंशियल सारे आप करेंगे, इस वजह से मुझे आप अपने फ्लिप के प्रॉफिट में से सिर्फ 20% मुझे दे देना, बाकी 80% आप रखेंगे क्योंकि आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइबिलिटी है, सब कुछ आपका है, मैं तो सिर्फ डील लेके आ रहा हूँ, तो मेरी 20% होगी। तो फिर वो फ्लिप करेगा, वो लोन करेगा, सारी चीज़ें लेके आएगा, पैसे उसकी कंप्लीट होंगे, वो सेल करेगा प्रॉपर्टी, उसमें से जो पैसे बचेंगे उसमें से 20% वो आपको दे देगा, क्योंकि वो जाहिर है एक असाइनमेंट फ़ी से ज़्यादा ही होगा क्योंकि इट्स अ प्रॉफिट, बट आपको उस तरह डील भी देनी पड़ेगी उसको, और वेरी स्मॉल अमाउंट पे उसको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर आप दूसरे उसके बाद वापस कोई डील लेके जाते हो और उसको बोलते हो इस तरह का कुछ, तो आप 20 नहीं करो, आप 30 कर लो, आप 40 कर लो, आप 50 कर लो, जब 50 पे आओगे तो फिर 50-50 होगा, जितनी लाइबिलिटी आपकी है उतनी लाइबिलिटी उसकी भी होगी। अगेन इट्स ऑल अबाउट द रिस्क, it's all about the risk. Okay, anyways guys, my wife did text it that she's okay, so I'm okay for a couple minutes, but I will let you guys go and we will come back to it, okay. But just remember, the more we do the deals, the more risk you take, the higher your commission will be, okay. सबसे इजी चीज़ होती है आपको एजेंट बनना, अगर आप एजेंट बन गए तो अब प्रॉपर्टी भले आपके पास नाम पे हो, अब प्रॉपर्टी सेल भी नहीं हुई तो आपके पैसे नहीं लगते जेब से, सो दैट्स अ गुड डील। बट यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी आपके नाम पे लगी हुई और आप सेल नहीं कर पाए, दैट्स अ बैड रेपुटेशन। But anyways, I will connect with you guys tomorrow, inshallah. We spoke about. Bro, I have one question. Bro, it's been 4 hours, man.
Okay, sure, go ahead. ब्रो मैंने एक स्टेट को हंट किया है, उसका जो प्राइस है वो 79,500 है। जब मैंने उसको एजेंट को $555,000 का कैश ऑफर दिया तो वो अभी इंटरेस्ट का पूछ रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस पर क्या है, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? 55,000 का आपने कैश बोला है? जी 79,500 है और मैंने 55 दिया है। तो वो इंटरेस्ट किस बात का मांग रहा है? तो हम कैश बात कर रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट तो होगा नहीं इसमें। तो मुझसे पूछ रहा है कि इसमें इंटरेस्ट कितना है, तो मैं खुद दे रहा हूँ कि अब मैं इसको क्या बोलूँ। नहीं, अगर आप सेलर फाइनेंस करते हैं ना तब इंटरेस्ट आता है। अब आप कैश कर रहे हैं, आपको उसको 25,000 देना है, उसके अगले दिन वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो उससे इंटरेस्ट का लेन देन नहीं है इसमें। उसको बोलो दिस इज अ कैश ऑफर, आई थिंक ही डोंट अंडरस्टैंड इट, नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ठीक कैश है। ऑफर में कुछ नहीं होता। मैं अगर बैंक से कैश लेता हूँ तो वो अलग बात है, मेरा और बैंक का मसला है, उसमें सेलर का लेन देन तब भी नहीं होता। सही। Okay, sounds good. I'll let you guys go, guys. We'll see you tomorrow, inshallah. We'll go from there. Bye for now. Okay, guys, it's been such a long chat, but I'll see you guys tomorrow.